Professor K. Vara Lakshmi ji. इस स्कूल की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की ये जो सभा है इसका जो शुभारंभ है मंगलाचरण से हम लोग करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण समस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। संगोष्ठी की इस विशिष्ट सत्र में उपस्थित सभी अतिथिजनों, गणमान्य विद्वान एवं विदुषियों, जिज्ञासु छात्र एवं छात्राओं का मैं हृदय के अंतःस्थल से अभिनंदन करती हूँ। And today, as we all are aware that we gathered here for a session that is going to create an atmosphere of an immense inspiration, because we are going to talk about the stories regarding the successful women, and there must be a good quality of exchange of thoughts that we all are hoping. And the topic, as we are aware of this session, is the stories of successful women. And we are having in front of us the four such successful women, or we can say the stalwart women. All of us are eager to know the efforts, the opportunities, the challenges they faced to reach their milestone of success. So, सत्र को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं सर्वप्रथम हमारी आज की जो अध्यक्ष महोदया हैं प्रोफेसर नीता ईमानदार वरिया के विषय में दो शब्द कहना चाहती हूँ। आप शिक्षा में नवाचार एवं विविधता की हिमायती प्रोफेसर हैं जो मणिपाल सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज की प्रमुख भी हैं। आप बहुविषयक दृष्टिकोण एवं सिद्धांतों के साथ साथ यूरोपियन अध्ययन में युवा विद्वानों की एक टीम का नेतृत्व करती हैं। साथ ही यूरोप और लगभग दुनिया भर में शिक्षा नीतियों, शैक्षिक परंपराओं और उनमें सामंजस्यपूर्ण प्रयासों में शोध एवं शैक्षणिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं। आपकी शोध के प्रति जो एक रुचि है वो शिक्षा द्वारा लोगों से जुड़ाव पर सतत केंद्रित रही है। प्रोफेसर नीता मैम मुख्य संपादक के रूप में मणिपाल यूनिवर्सल प्रेस की गतिविधियों की भी देखरेख करती हैं। मैम, मैं आपका सहृदय स्वागत करती हूँ और मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आएं और मैम का स्वागत करें। Welcome, Ayushi ma'am. And actually, I was just about to talk about you. And now it's really the time to introduce, like other first speaker, I must say. So I just want to take this opportunity to welcome Dr. Ayushi Debas, Assistant Collector, Goa. And her journey is nothing. Her journey is nothing short of awe-inspiring, reflecting a tenacious spirit and a pursuit of excellence that knows no bound. Ma'am's academic brilliance shine brightly as she secured the top position in all the 3 years of her graduation from SPM College, Delhi University. And her thirst for knowledge led her to achieve a first division in her master's as well. And eventually, she grabs her B.Ed from Jamia Millia Islamia University, which somehow establishes her expertise in the field of education. And definitely in August 2021 was a moment of the glory arrived as she qualified for the UPSC, the securing an all India rank of 48. And ma'ams, your presence here is a privilege and your life experience will undoubtedly leave us inspired and motivated. So
Let us all warmly welcome Ayushi Debas, ma'am. Welcome, ma'am. And now I just want to request the chairperson to do the honor for that. अब मैं हमारे सत्र की जो अगली जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं प्रोफेसर शिवानी वी महोदया का एक संक्षिप्त परिचय आप सभी के सामने उपस्थित करना चाहती हूँ। आप अनुसंधान सहायिका, अतिथि प्राध्यापिका, वरिष्ठ भाषाविद, उपनिदेशिका, एसोसिएट प्रोफेसर जैसे महत्वपूर्ण गरिमामय पदों पर आसीन रही हैं तथा अपनी विद्वता एवं कौशल से निरंतर इन पदों को चरितार्थ किया है। आपने वर्तमान में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष व्याकरण विभाग एवं डीन शास्त्र संकाय कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय के पद पर आप कार्यरत हैं और निरंतर शैक्षिक परिवेश की मर्यादा और गरिमा को उच्चतम स्तर तक ले जाने की प्रक्रिया में आप स्वयं को संलग्न रखने की संकल्पना से युक्त रही हैं और आपकी विद्वता और कार्य करने की विविधता एवं विलक्षणता आपको समकालीन विदुषियों में एक अलग स्थान प्रदान करती है। मैं आपका सहृदय से स्वागत करती हूँ मैम। और अब मैं अध्यक्षा महोदया से अनुरोध करूंगी कि वो मैम का वेलकम करें। And now, with a remarkable 15-year of service, the Professor Vara Lakshmiji's contribution to Sanskrit literature are truly commendable. She has translated the 5 Telugu books into Sanskrit, edited 12 books, and published the several scholarly articles and actively provided the voluntary services to Sanskrit Bharati. Notably, her work includes the 5 stories in the prestigious Sanskrit storybook that is known as a Sanskrit Katha Satkam. As an accomplished scholar, she has presented numerous articles in various seminars and conferences, both nationally and internationally. Under her leadership, the project like the Sanskrit Hindi machine translation system and Sanskrit computational linguistic tools have flourished. So let us eagerly welcome the Professor K. Varalakshmi ji as she graces us with her insights and expertise and going to enlighten us, all of us rather, the profoundly the beauty of Sanskrit. So I think it's time for us to get ready to get the wisdom of this extraordinary scholar and the leader among us. So let's welcome the Professor Ki Varalakshmi ji. And again, I just want to request to the chairperson ma'am to give it an honor to Varalakshmi ma'am. Now on the list, it's a time to welcome the Nirupama Rajendran ma'am. Srimati Nirupama Rajendra ji is India's the foremost the classical dance exponent and her devoted over the 30 years to the field of dance alongside her husband Sri Rajendra ji. Together, they excel as the dancers, the choreographers, the teachers, producers, and organizers. Their internationally acclaimed production house, that is an Abhinav Dance Company, has showcased somewhere more than 200 original works to a global audience of over the 7 million art enthusiastic across the 5 continents. So, like that makes the Nirupamaji to put on a significant contribution to the dance community through research and the outreach projects. And notably, she also introduced the 108 dance movements of the aesthetic and the functional values. And Srimati Nirupamaji earned
like her the most prestigious artist recognition on Doordarshan as well. And additionally, she received the so many esteemed awards, including the Karnataka Kalshri from the Karnataka Sanskrit Nritya Academy, the government of Karnataka. So this exceptional contribution to the dance field were further acknowledged with the Kala Sarthi Award from the Art of Living Bangalore, bestowed with the blessings of Pujya Swamiji Sri Sri Ravi Shankar Guruji of the Art of Living Foundation. So I want to request ma'am, chairperson ma'am, to like welcome Nirupama ji. ये हम सबके लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमें इन सब महान स्त्रियों का सानिध्य प्राप्त हुआ, और मैं आप सभी के व्यक्तित्व के जो विविध पहलू हैं उनको शब्दों में बांध पाने में स्वयं को असमर्थ महसूस कर रही हूँ। फिर भी मैं इस दायित्व का निर्वहन करते हुए इस क्रम में आगे बढ़ने का प्रयास करती हूँ। तो जैसे कि हमें पता है कि लाइक देयर आर लाइक सो मच ऑफ स्टॉलवर्ट women like who are sitting around us, across us rather. So because there is a young icon, a youth icon, that is an Ayushi Dabasji, because in a very young age she cracked her UPSC exam with a very good rank. So I just want to start with her कि मैम किस तरीके से जब आपकी जो एकेडमिक जो जर्नी शुरू की आपने और अपनी लक्ष्य प्राप्ति तक का जब निर्धारण जो आपने किया, उसमें आपने कौन कौन सी ऐसी चुनौतियों का सामना किया और कैसे आपने उनको ओवरकम करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज बनाई? नो नो नो, लाइक क्योंकि मुझे लगता है यहाँ बैठे मैक्सिमम जितने स्टूडेंट्स हैं वो सब ये जानना चाहते हैं, क्योंकि लाइक व्हेन वी गूगल योर नेम देयर लाइक सो मेनी थिंग्स ऑन द इंटरनेट. Respected Chairperson, ma'am, all the esteemed dignitaries on the dais, and all the august gathering who have taken their time out to attend this beautiful program. A very warm good afternoon to all of you. First of all, I want to congratulate Central Sanskrit University for organizing such a beautiful and memorable event for celebrating women empowerment. It, I also attended it yesterday, and I must say ki it was very beautiful, extremely good cultural program. And for me especially, I want to extend my heartful gratitude for inviting me here to attend this event. As I have served as a teacher before becoming IAS officer, so to come an education institute, to be a part of educational events, to be amid of students, young generation is like a blessing for me. So I am feeling extremely honored and blessed sitting here today. Thank you so much. Coming to my journey, actually it began in 2016. I was working as a teacher, primary teacher at that time. First of all, I completed my 12th class, then gradually I got admission in Teacher Training Institute. Then I completed this. The same year I got the job as teacher. Next, I worked in MCD, then Delhi government. Then my mother, she even inspired me that I should try for UPSC. It was her dream actually. She wanted to see her daughter as IAS officer. So, thank you so much. Talking about the difficulties and journey, of course, it was very difficult. But the all the inspirational thoughts, all the teachings of our teachers who keeps on teaching us in the school ki where there is a pain there is gain, there is no shortcut to success, all that proverbs phrases, all that examples comes true actually when we achieve it.
For me, challenge was more because being a girl to pursue our dream is difficult. Today also it is little difficult in our society. And being a differently abled girl, being a blind girl in our society, and who is dreaming to become an IAS officer, you can't imagine the pain. What kind of, like, not only the social barriers were there, no, but also the accessibility challenges were there. First, we begin with reading or recording the books. First, we go through the syllabus, what UPSC asks generally, and then first we observed there is no limit. Anything under the sun can be asked. So it was in 2016 when my whole family came together and they started recording some books for me. Later on, as the technology developed, technology became more accessible. I learned to use smartphone. Then we downloaded PDF in that, used YouTube for studies. Like I, because my studies were concentrated on listening only. So, and everything was not available online. But I was fortunate enough that my family, my friends, even my friend, one of my very best friend also accompanied me here also. So that kind of support on every step I got from my family, friends, and teachers. Accessibility, when I talk, so if we want to study something, in general, we have a book, we will search, go to market, we will get the book and we can study it. But for me, it was more than a book. I had also to find out how I would read the book. So that kind of challenges were there. Then we find out a way. But one message I would like to give you today is that you should have the vision and you should have the courage to dream big. Don't be afraid ki I can't. Okay. So Very. that are some challenges. Thank you so much. Thank you so much, Ayushi ma'am. It's very inspiring. And the very most important, that the thought you shared is the role of family. जब हम फैमिली की बात करते हैं कहीं ना कहीं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और हमारे साथ में है प्रोफेसर के वरा लक्ष्मी जी जो शायद एक नॉन संस्कृत फैमिली से आती हैं जहाँ पे संस्कृत का शायद इस तरीके से कल्चर नहीं था एंड नाउ यू आर अ वेरी लाइक एन स्टॉलवर्ट इन द फील्ड ऑफ संस्कृत तो आपको क्या लगता है कि मैम आपको किस तरीके के ऐसे संघर्ष विरोधाभास देखने के लिए मिले जब आपने अपने आप को एक नॉन संस्कृत बैकग्राउंड से एक संस्कृत बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करी और क्या कोई ऐसा ट्रेडिशन फैमिली कल्चर कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है तो आप वो बताइए यस प्लीज ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु सभाय नमः सभा अध्यक्षायै नीता प्रोफेसर् नीता इनामदार् महोदयायै नमस्सुमाञ्जलिः तथैव सभायां विराजमानाः महिलाः विशिष्टाः महिलाः मम स्फूर्तिप्रदायिन्यः ताभ्यः नमो वाकं समर्पयामि सभायां नैकाः महिलाः उपविष्टवत्यः तथैव विद्वांसः उपविष्टवन्तः ये मम भ्रातृतुल्याः गुरुतुल्याः याभ्यश्च अहं संस्कृतशिक्षाम् अधिगतवती तेषां पुरतः अहम् उपविश्य एवं मम जीवनविशेषं वा भवतु मनोगतं वा भवतु समर्पयामि इति अहो मम भाग्यं संस्कृतेन वक्तुं श्रोतुं च अस्माकं क्लेशः नास्ति इति मन्ये सर्वस्य मनुष्यस्य निजपरिवारः भवति संस्कृतपरिवारः अथवा सामाजिकपरिवारः भवति अस्माकं विषये संस्कृतपरिवारः निजपरिवारस्य योगदानेनैव अहं संस्कृतशिक्षाम् अधिगतवती
मम पिता तु संस्कृत अनभिज्ञः, किन्तु सः वृत्त्या इंजिनियर्, किन्तु प्रवृत्त्या संस्कृत उपासकः। सः सनातनधर्मपरायणः। तस्य विश्वासः आसीत् सनातनधर्मस्य पालनेनैव मनुष्यस्य, अस्माकं भारतीयानां समुन्नतिः भवति। अतः अहरहरं सः परिश्राम्यते स्म यत् अपत्यानि संस्कृतं बोधनीयानि इति। अतः अस्माकं बाल्ये एव समाजं परिशील्य यत्र क्रिस्टियन् मिशनरी विद्यालयानाम् आधिक्यं आसीत्, हैदराबाद्नगरे अधिकतया भवति, तत्र सनातनधर्मं बोधयन् विद्यालयः कः अस्ति इति सः सर्वेक्षणं कृतवान्। एकवर्षं यावत् सर्वेक्षणं कृत्वा तादृशे विद्यालये अस्माकं प्रवेशं कल्पितवान्। अतः मम पित्रे अहं मम पितुः कृतज्ञा अस्मि, अधमरणा अस्मि। यतः सम्पूर्णः समाजः पाश्चात्य विषवल्लरीमूर्छितः अस्ति परिसरः। तादृश्यां स्थितौ अपि पिता तु तथा कटिबद्धः आसीत्। सः संस्कृतस्य अध्ययनं कर्तुं प्रयासं कृतवान्, अस्मान् अपि प्रचोदितवान्। पद्मश्री विभूषितः, पद्मश्री बिरुदाञ्चितः पुल्लेल श्रीरामचन्द्रमहोदयः तस्मिन् काले एव 1960 ततः एव संस्कृतप्रचारे कटिबद्धः आसीत्। सः संस्कृतभाषाप्रचारसमितिं, सः शताधिकग्रन्थान् रचितवान्, तथापि संस्कृतप्रचारे अपि कटिबद्धः आसीत्, स्वजीवनं समर्पितवान्। वयं सर्वे परोक्षतया तस्य शिष्याः। अहं तादृशस्य महानुभावस्य शिष्या, परोक्षशिष्या इति वक्तुम् अहं गर्वम् अनुभवामि। ते संस्कृतभाषाप्रचारसमितिं चालितवन्तः भाग्यनगरे। तेषाम् आध्वर्ये रविवासरेषु एवं कक्षाः प्रचलन्ति स्म, यत्र अस्मान् मम पिता नीतवान्, संस्कृतं बोधितवान्, गृहमागत्य अपि बोधयति स्म। द्वितीया मम माता, सा अल्पमेव पठितवती, किन्तु रामभक्ता। पारम्परिकया ते रामालयान् निर्मान्ति स्म, परिवारजनाः। तस्य पिता रामालयस्य निर्माणं कृतवान्, अतः सा दृढसङ्कल्पं कृतवती, मम जीवने अपि एकः रामालयः निर्मातव्यः। अधुना अस्माकं परिवारः, पितृपरिवारः एकं स्लम् एरिया इति वदामः खलु, तत्र निवासं करोति। सा रामालयाय निजधनं सर्वं समर्प्य निर्मापितवती, विग्रहप्रतिष्ठापनं कृतवती। एषः मम सङ्कल्पः, मम कुलव्रतमस्ति। सा मया सह वादं करोति, अहं वदामि निजधनं सर्वमपि समर्पयति खलु, व्यर्थं करोति खलु, अस्माकं कुलव्रतमस्ति, अहं कुलव्रतम् आचरामि, भवती का माम् आदेष्टुं, मया सह वादं कर्तुम् इति सा वदति। तस्याः सङ्कल्पेनापि कुलव्रताचरणेनापि अहं बहु प्रभाविता अस्मि। मैम ने हमारे सामने एक बहुत सारे एक वाइडर पर्सपेक्टिव को रखने की कोशिश करी है, जितना मैं समझ पाई हूँ बात को। हमने फैमिली के पर्सपेक्टिव को देखा, कहीं ना कहीं सनातन धर्म की बात हुई, एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव को देखा, अपनी एक्सेसिबिलिटी टू एजुकेशन को देखा। और हमारे बीच में मैं बताना चाहती हूँ, जो प्रोफेसर शिवानी जी हैं, वो एक ऐसे व्यक्तित्व की महिला हैं जिन्होंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ काम किया है कि शायद जो आगे आने वाली जनरेशन है वो उसमें लंबे समय तक काम करती रहेगी। वो उन्होंने एक संस्कृत का एक एजुकेशन मॉडल का एक पर्सपेक्टिव यहाँ रखने, मतलब उन्होंने एक काम के साथ देने की कोशिश करी है। एंड डेफिनेटली इट वाज नॉट एन ईजी टास्क। तो मैम, यहाँ मुझे लगता है सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने किस तरीके से जो इस एजुकेशन को जो एक्सेस है, उस एक्सेस को इतना आसान किया कि आप एक अपने आप में कीर्तिमान स्थापित कर पाई। और कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो नॉर्मली जो फीमेल हैं वो एजुकेशन में फेस करती हैं, जो आप अभी भी देख रही हैं। तो हम सब शायद जानना चाहते हैं आपकी जर्नी के माध्यम से। सर्वेषां नमस्कारः। एतादृशकार्यक्रमाः अवश्यं करणीयाः। तेन यत् अस्माभिः यत् फेस् कृतम्, अस्माभिः यत् आर्जितं, तत् ज्ञात्वा सर्वाः अपि महिलाः प्रचोदिताः भवन्ति। अतः एव प्रथमम् अहं धन्यवादं समर्पयामि
Central Samskrita University is organizing such a wonderful program. So where we can share our own experiences and we can motivate other women. So thank you very much. Um, for me, all women are successful, either in profession or at home or anywhere, because they are making home, they are making the profession, they are making India, Bharat. So they all are successful. Uh, if you ask me, so you ask me about the challenges. एक्सेस लाइक Yeah, आपको यहाँ तक पहुँचने में जब yeah. एक्सेस करा एजुकेशन को तो क्या क्या चैलेंजेस थे? First, see, I have a different experience from this Varalakshmi and Aishi. From if I say my from my house, I'll start from my home. Actually, my parents were not supportive for education because I belong from a non-educated or non-Sanskrit family. So even for Sanskrit, they opposed me like anything. Okay, Not so only Sanskrit to come at this level, it's yeah. So after my graduation, so somehow they because no they value education and all. My father also he educated us. We four were there, my sisters and all. So but after my sister was also my elder sister was very brilliant actually. She was getting 100 out of 100 for mathematics and literature, but after her graduation they stopped her studies and got her married because, but she wanted to study and she wanted to reach some good level. But no, all girls face such problem in one age, because you know when we reach the age of marriage, no, the parents want to get us married, and so then our studies everything will get stopped. So I had this experience. I saw my sisters this worry and all. Then I decided that I don't accept this. Okay, so I also came to that age and they asked me after my graduation, they said, no, no, we will get you married, no studies at all. I said, no, I want to study, I don't get married. Someone came and I said, I don't want to marry you, now I have to study. Then what happened? No, then my parents, no parents, uncle, everyone gathered. It was a big meeting. Okay, they asked me. They gave me two choices. Either you can marry and continue here, or you can leave the house. So they thought that I opt the first one, because that time no we are village girls and we don't have courage, because then I said I'll go out. Okay. I got. I want to study, so I'll go out. If you don't, I also gave them choice. Either you want to, you if you want to keep me here, you have to let me study. Otherwise, they also said, then you go out. So then that time I was working with Samskrita Bharati also. I told them that I want to study at any point, and I have a very best friend, Ranjini. She said, and her parents also were very supporting. I said, I'll come. Otherwise, either I continue my studies or I commit suicide. That's all. I oh, said. Otherwise, I was so strong. I was very bold that I have to continue study. So then she said, don't do that. You come with me. Then I went with her also. Then my parents and also came. They said, I'll let her be here for some time. Okay. Then again, somehow, so many challenges were there, but I continued studies. And fortunately, after my MA, then but I was not allowed to go to my home. It's like love marriage. I loved I loved my studies and married to my this. So I could not, no, I was wow, not. Yeah, I was not very allowed to go home. courageous decision. Yes, it was. I now I cannot think actually. Then I after MA I thought what to do next. No, what to do? I don't know, because no such opportunities, for no job opportunities. I want to study, so I joined for PhD, but where to stay and what to do? Then I came to know that some workshop is going on Tirupati. That is the first time I'm going out of Trivandrum. I'm from Kerala, so I can take time. No, so time. No, it's Yeah. perfectly fine. I guess everybody is interested in knowing your Yeah. journey. So, so then one Professor K.V. Ramakrishna Acharyalu, Tirupati,
So I met him. One of my guru suggested Professor Vasudevan Potti sir. So I went him. I did not know any language except Malayalam and a little Sanskrit. Okay, no English, no Hindi, nothing. So I just went and met him, and he said he asked me to work there for a week with him. So I was working with him on this computers and nothing. I did not know anything. But even then, whatever he asked, I did. That was the no. He was parikshana. He was doing parikshana. So then after 1 week, he asked me to. He said, you continue here." Then I said, "No, how do I do? Because I don't have any money, nothing, no support." Then he said, "I'll support you." I said, "No, I don't want to be dependent. So give me a job, then I'll continue." So he was so powerful there, and the very that day he went to the VC and he came with some appointment order in a project. Actually, that was the first job Wow. I got there. So then I continued my studies in natural language processing, the Samskrita and computer and all, and at the same time I continued my PhD also. So somehow then that was the journey. My God, Okay. it's really, I mean, So like commendable and learning for all of us, inspiring story yeah. that how you So actually, like so every time handle your self doubts, discouragements. so see, always know I take challenges as opportunities. Okay, so when my parents asked me to go out if you want to study, I thought it's an opportunity that I'm getting lot of time, and no, I can fulfill my own wishes. So just I took that. It was a great challenge for any girl. Okay, coming out of what the what do we do out of the house? Because that no, there we feel we are secure at home, under my father and uncles and all. But it was a very difficult choice for me. But I took it as an opportunity for studying. Wow. Like that, many are there, but I stop here. इसके लिए भी Thank you very बहुत much. करेज चाहिए किसी ऐसे चैलेंज को अपॉर्चुनिटी की तरह Yeah. देखने के लिए डेफिनेटली मतलब आयुषी मैम मुझे लगता है आपका ये जो सफर रहा उसमें आपको भी कई बार सेल्फ डाउट और डिस्करेजमेंट जैसा कुछ कभी ऐसी फीलिंग आई होगी आपने उसको कैसे हैंडल किया Yes. So, yeah, since it was a long journey and took lots of efforts and dedication, so undoubtedly I faced some challenges, doubts, apprehensions, ki whether I will be able to clear or not. So it happened at that time when I was not able to clear my UPSC mains exam third time in a row. I cleared prelims every time, but not able to make it for mains. Fourth time I gave mains and then faced interview and then get rank 48. But the time in between was very challenging. You start doubt yourself. Then the thing which help us is to recognize our mistakes. Ki what I am doing wrong. There are some success mantras in everybody's life who is pursuing their dreams and want to achieve something. Definitely, there are some uh, the lines, the mantras, the words, the teachings which we remember every day. So, for me, the 7 letters of success means something. Like I want to share with you, as as I said, for like self discipline. I have to be self disciplined. And when, because I was preparing with job, I was continuously working since last 10 years. When I resigned, I was working as lecturer history. Other than job, I was continuing my study. I completed my master's and B.Ed along with my job and UPSC preparation. So it became very important to set your priorities in life. If you are self disciplined, then you will set a timetable for you. Again, you stands for like utilizing your time and understanding your potential. It is not essential that everybody clear UPSC and become, yeah, everybody became such artist or something. Like, you can believe, you can trust yourself, your dreams. You should recognize your potentials first. What can I do and what can I
not do, what I can't do. Then push yourself. You should remember every minute of your life what you want to do, what you want to achieve, and then be ready to take every step in that direction. Take, take every step which bring you little closer to your destination. Then again, see for courage, courage to accept challenges. It is very important in life, as every stage of your life demands a new of you, a new version of you. When I was teacher, my professional demands were different. When I was student, my life demanded anything else from me. So keep changing yourself, keep unlearning and relearning, keep adopting, keep adaptation. Like adaptation is very important. Okay, don't like we say na. Usually we say, keep like flowing water remains fresh. So that's freshness should be in your life. Keep changing, keep adopting. Again, for C for consistency. Though it is not a journey of one day or overnight, you can't achieve your dream. So consistency should be there. If you know you need to read newspaper every day, then some time you should give to newspaper. It is okay you are not able to read it 1 day, 2 day, 3 days, but it is not okay you are not reading for 1 week. So you should be consistent. Then be enthusiastic, be energetic. Keep yourself keep yourself energetic. Do spend some time in a day, 1 hour, 2 hour, to do such works which make you happy. You love to listen music, listen to it. You love to play badminton, play it, because these things are refreshing. Once you come from the playground and start your studies again, you will feel refreshed. Your output will be increased. Then again, be strong. The most important thing is be strong. The same lesson also we learn from the life of Yajnaseni. Actually, Yajnaseni for me is like a responsibility which she has given to every girl. We being a woman or girl usually thinks of everybody in our home. Mother ने खाना खाया कि नहीं, पापा ऑफिस से आ गए क्या, what my brother was saying, only the thing we forget of ourselves. So be thoughtful of ourselves also. When we will spend time on ourselves, then we will realize our mistake, we will dream, we will improve, and we will fly. Okay, thank you. थैंक यू सो मच आयुषी मैम। और मैम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द का इस्तेमाल किया, सेल्फ डिसिप्लिन। और जब हम सेल्फ डिसिप्लिन को अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो कहीं ना गुरुकुल का नाम दिमाग में आ जाता है। और यहाँ हमारे साथ हैं जो प्रोफेसर वरा लक्ष्मी जी हैं। उन्होंने अपना अध्ययन और शायद वो गुरुकुल में काफ़ी समय तक रही भी हैं। तो हम सब मैम से जानना चाहते हैं कि क्या आपके वहाँ पे कुछ इस तरीके की कुछ यादें, कुछ ऐसे अनुभव थे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया जिसके कारण आप शायद यहाँ तक पहुँचे। कुछ अच्छे, कुछ ऐसी जो मेमोरीज हैं अगर आप हमसे साझा करेंगे सबसे तो शायद अच्छा लगेगा। I'm a science graduate, actually. Along with this modern studies, I studied even Sanskrit from childhood, but I got graduation in BSc Science. So after graduation, uh, what to do? Future plans, thinking about the future plans. And my younger sister inspired me to pursue Sanskrit studies. Even I have passion towards Sanskrit. Penna Madhusudan sir, who is working in Kavikula Guru Kalidasa Sanskrit University, was pursuing PhD, his PhD. He was a student at that time. He conducted 10-day training program for MA entrance examination. Nobody asked him. He and his team conducted that one. They gave coaching to us, how to prepare for the examination, how to crack that entrance examination. And they imparted knowledge. More than knowledge, they inculcated samskara. All Sanskrit teachers
Not only knowledge, they also inculcated samskaras, all Sanskrit teachers. And that is the beginning of my journey in Sanskrit field. And because of his inspiration, I could complete my MA, and I could achieve 2 gold medals because of my Sanskrit teachers, Kamala Madam, Professor Kamala Madam, whose successor is Professor Varkhedi sir in Sanskrit Academy. I want to tell, I want to inform you that Professor Srinivas Varkhedi sir was director of Sanskrit Academy from 2008 to 2011. He literally trained us during his tenure. सामान्यतः एका सूक्ति अस्ति, for every behind the success of every man there is a woman. But in my case, there are so many men behind my success. First, my father. Second, my teachers like Penna Matsuan sir, Dorbala Prabhakar Sharma ji, Krishna Shastri ji, Janardhan Hegde ji, Vishwas ji, and Professor Srinivas Varkede ji in my professional life. He was like my father. Actually, he is younger to me. But Jnanavruddhaha, Asmant, he trained each and every employee. Now you have that kind of experience in this program. Yeah. You all are having that experience, that training. Yes. He's assigning some job, and by that job, you're learning, gaining skills. And 3 years, that was like a training period to us. Today, I could sit in front of you and speak few words, share my experience because of him. He trained us to coordinate project works and organize this kind of events and propagate Sanskrit language and research work, mainly research work. He conducted every workshop, seminar, and so many programs only to train us. The main objective is train the employees. I'm also learning the culture of Sanskrit yes, with this. I'm witnessing that and telling. थैंक यू सो मच मैम। मैम ने अपनी ये जो डिस्कशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जहाँ पे उन्होंने अपना रोल ऑफ हस्बैंड को लेके भी उन्होंने हमसे बात करी कि एक मुख्य भूमिका निभाई है। निरुपमा राजेंद्र जी यहाँ पर हैं। डेफिनेटली मैं आपसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर इन द सेम फील्ड, like what sparked that decision of collaboration, because you're collaboratively working as well to establish the Abhinav dance company. So, like, we are eager to know this first before getting into something else. Namaste, everybody. I've just been put in the spot. I came only to perform yesterday. There is But, again a performance. Gee, well, um, I must remember our guru, Dr. Maya Rao, Maya Didi, whom we address, our Kathak guru, who was from Delhi. I mean, who was from Karnataka, who came to Delhi and learned under the great legendary Kathak guru Shambhu Maharaji. And she established Kathak Institute in Bangalore. That's where Rajendra and I were learning Kathak together. And she brought us together uh, in a performance. So that was the first work assignment that was given by, rather ordained by our guru, and how Rajendra and I started practicing together. And it was very fascinating for us. Being in South, we were not accessible to Kathak, but here we were dancing with tabla and harmonium, and then we had to practice together. It was so beautiful. So we both started sharing our time with something so beautiful as art. And art, our guru, and this energy of harmony, of two people coming together. Of course, we were much younger, and that enthusiasm and that josh was there, passion was there. So we started dancing together. There's one thing. When we started as youngsters, we had a very healthy competition in the sense who can practice for longer hours, who can recite the bowls better. And so, with that, as youngsters, that when all our friends in the dance class, we used to go by train. They used to sing ek, do, teen, char, panch, chhe, saat, aat, no, those songs. While Rajendra and I would sit in the window and practice tigda, 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 who can say, faster. So our time we invested constructively
in developing our skills. Our gurus teach us. Acharya padamadatte padam shishya swamedhaya padam sa brahmacharibhyah padam kalakramena cha. So that learning that has come to us for last 30 years, we've been still the same excitement. I can say when we dance as couple or when we are together as couple, who is right doesn't matter. What is right matters. So we always put the art in front and we subserve the art. And so I can say we are married for 28 years, Wow. but I think we are married to art since 10 janmas. And I have to say that we have a principle when we started working together, that nobody should come to our programs, saying my chacha ki beti is dancing, my somebody is dancing. They come out of obligation. They must say, here are two artists who do good art, and saying that people should come. And that's how even till today, I mean, yesterday Kamani was full. We are so grateful because people recognized this art side of ours and they came. And of course, I'm very grateful to Central Sanskrit University and Sangeet Natak Academy for inviting us. But there's something that is seed in us as artists, that giving oneself fully. For us, art is not full time, it's overtime. We are completely involved in that. I just would like to say to the youngsters who are here, who are pursuing their field, I just saw that how patience, because today's world, there is so much of mental stress. This was not there when we were young. Now every youngster is undergoing stress, mental stress, because it is a very instant gratifying world. I think we should go back to our roots. And Central Sanskrit University is doing so good by giving such great education. It's so important when we pursue a classical art. It teaches us so much of patience, so much of uh, generosity to share, and working together as couple, how we give ourselves to something much bigger. This is something very important. And it's not just our marriage, but I was married into a joint family of 62 people in the same house. Oh, wow. 62 members in the same family. And then you see there are so many other ladies, there are so many other generation of people. We develop a sense of adjustment, adaptability, and I have to say, my father, who was one of the greatest educationists who served in the field of education for 40 years, would say, when you're married and you're going into a house, make sure every member of the family love you. And that is a sense of what our parampara gives us. So I would like the youngsters here to see what your parents are saying, what your teachers are saying, and what you believe as a person. Rajendra and I, we love this world, and we want to make this world, with whatever little way we can, a happier world. And so, prekshakanam pramodaya प्रीतये परमात्मनः kurmasva chitta shuddhyartam chidrasabhinayam vayam. We pursue our art. We want to entertain. At the same time, we want, because our classical art is a divine art. So we seek that the gods are pleased. And then in this whole process, life process, art process, it purifies us. We are able to overcome so many things in our own lives. Can I just very quickly say, when my mother passed away in the morning, that evening we had a program for a chartered accountants conference. There were 1,000 people who had assigned, and that evening was a program. I told my father, Appa, you have a choice. You sit at home, cry. Even I am deeply pained. Or you come, I'm going to perform that evening.
I'm going to celebrate life. You want to come? And he came. My father came, and I told the organizers, here is one person who's lost his wife, and I'm here on stage. I lost my mother, but we are here for Goddess Saraswati. And also, when my father passed away, that evening in Mysore, we had a program for Nobel laureates had come, and it was a great educationist conference in Mysore. And and I was the only one who had to do the cremation. Of course, I had my brother who had also passed away young, and so I was there in the crematorium reciting Vishnu Sahasranama Stotram, sending my father away. And then from there, we went directly, we went home, changed, went to the auditorium and performed because my father was an educationist. And what better than to be sharing our art with educationists? So, what gives us this strength? It is the rasa tattva that classical art gives us, where we can be in the character and be out of that character. And this greatest gift art has given us, and a life partner like Rajendra, who is like Sri Ramachandra. His calm and composed nature. People, when I said we are married for 28 years, they said, oh, really? You look so young. But I must say that what makes us happy is that contentment and a kind of nemadi we should have. And I respect my husband very deeply. As a wife, I will never do anything. This I've said in many interviews, that will cause any kind of a discomfort for him, and he at the same time takes care like that. So the younger girls here, it is very important to achieve what we want to achieve, but at the same time it's so important to give ourselves and make our surrounding happy, make our own people happy, whether it is parents or whether it is husband or whether it is in-laws. It is very important to give love and to take the loving support of family to achieve what we want to achieve. Thank you. निरुपमा मैम ने हमारे सामने स्पेशली मुझे लगता है कि मुझे एक इंक्लूजन को देखने के लिए एक नया आयाम दिया है। मैम ने बहुत ही अच्छे से शायद कहीं ना कहीं हमारे सामने एक पर्सपेक्टिव रखा है, द इंक्लूजन ऑफ डिफरेंट कल्चर, inclusion of different perspective, different thoughts and different families. I mean, how you guys come together and make actually or achieve or accomplish so many things very effectively and efficiently. And I'm feeling myself fortunate to be here actually. So, I just want to come actually to Professor Shivani ma'am, because ma'am talked a lot about institution, जो कथक केंद्र की जो जहाँ इन्होंने बात करी, जहाँ कथक सीखा, and like we were talking about indirectly somewhere about inclusion. कहाँ तक आपको लगता है कि जो institution है, वो वहाँ पे आपकी अपनी लाइफ जर्नी में, या फिर अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, इंक्लूसिविटी के एलिमेंट को बहुत इफेक्टिवली आगे लेके जा पा रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि इंस्टीट्यूशन ने आपकी लाइफ में इस इंक्लूजन को लेके कितना रोल निभाया? और क्या वाकई में आई मीन आपकी लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट किया इंस्टीट्यूशन ने, लाइक व्हाटएवर यू वांट टू शेयर? About my professional life, no? Yeah. Um, Actually, now I am working Karnataka Samskriti University as a professor. Uh, no, already challenges are over. It's very nice. Say women anything bad, and I'm bold also. That's why people bit they are scared to do something. That is also there. So if they know, they think twice. If they have to do, if anyone has to do something, they think twice. Okay, that's good or bad, I don't know, but it is there. So see, during my academic journey,
many supported me actually. I got a lot of support, not only from our university. Actually, when I started my journey in Chinmaya, with Chinmaya actually. I was a deputy director in Chinmaya, this Chodha Sansthan under Central Sanskrit University, like Varalakshmi Bhagini. But there I had some challenges also. Actually, I wanted to achieve something. So, see, I had a dream once I started this academics. I wanted to be a professor. Okay, so I cannot sit idle because no, that much struggle I went through and came to this point, and I could not sit this. But unfortunately, because of some incident happened in my life, so I was alone. So the first thing was I was not getting a house to stay because I am alone. All ladies may face this. Okay, I was not, but I have to see where to. I'm not getting a proper shelter. It was a big challenge actually. Then I thought, why do I depend on others? I made my own house. Okay, I tried and made my own house, and I started actually. Then it was a very safe place for academics. Actually, I come home and reading and like many scholars supported me. The one is Professor Srinivas Varkedi sir. Actually, sir was my guru, and then we were colleagues also. So and KV Ramakrishna Macharyalu, like that, no, many scholars actually really supported me for their advice, how to grow, where to work, how to write papers. Okay. And Professor Amba Kulkarni, she's a gem in academics. So they trained me like anything actually during my academics, how to present papers in conferences. I was not at all confident like that, like this, but no, each and every step they gave me confidence. And now what I am doing at my universities, if you see, I don't know, because of my experience, all my colleagues are women. Okay, in my department of Vyakarana I'm heading, they're all assistant professors, guest faculties, everyone is women actually. So intentionally or unintentionally I'm selecting women only, because I think they have lot of strength. Even if they have some limitations, they have lot of strength to do. They, if they commit somewhere, if they take something, they will finish. That is the confidence I got from women actually. At least to this I'm not comparing, but even if men are committing, but they somehow they skip, they may skip, but but women are not like that. This is my experience actually. So so I'm sorry, I'm not, I don't want to hurt, but this is my experience. If no, even if we organize some program, actually I have a team of women. Boys are also there, but most of them are women, for all seminars, workshops, and even we have lot of projects. And see, even some almost some 70 to 75 lakhs project we have under my department, and many research scholars are working. Most of them are women, actually. So they are working, and see, we at university we are giving opportunities to ladies for coming back to education. Okay, so see, at our university, age is not a barrier, and I myself actually Workadis are only started that actually. No, they made education open. So see what happens once they get married. Then, because of children, because of other commitments, they cannot continue their studies. But that question, no, that remains. So someday, after many years, when all these no children and husband, everything is settled, and they have their own words at home. Okay, voice at home. Again, they want to come back to their dream. Okay, so we are giving such opportunities, and we have lot of women and housewives for continuing their education, and being a Sanskrit teacher actually. So actually, speaking Sanskrit is my power. From this young age, Sanskrit made me so bold. Sanskrit made me so confident, and Sanskrit gave me so much patience.
See, whatever comes, no, I can be so patient and I can face it. Any problem that I got from Sanskrit actually. Wow. Okay, so then it's the same thing we are transferring to next generation. Means many women are studying there, so we are giving lot of opportunities, and we are motivating women to see. Obviously, this is open for boys also, but it's a separate wing we have for higher studies. And lot of, see, after getting frustrated with IT companies and all, see, women come back and join here for Sanskrit studies, thinking that they get something out of that, they can lead their life and they can be peaceful, like that. So they are coming there, and we are giving training actually. No, we are giving training, and we have a big team like that. um, uh, so this is the professional thing we नहीं, have. थैंक यू सो मच मैम। मैम ने बहुत ही इफेक्टिवली हमें कुछ चीजें बताई कि एज का कोई प्रभाव नहीं होता, आप कभी भी वापस जाके चीजें शुरू कर सकते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट रिसर्च एंड एवरीथिंग। लाइक यहाँ पे कहीं ना कहीं एक चीज आती है दिमाग में कि किस तरीके से आर्ट्स को हम इस तरीके से लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। लाइक इफ आई जस्ट वांट टू आस्क यू निरुपमा जी कि आर्ट इज इन्फ्लुएंसिंग लाइफ और लाइफ इज इन्फ्लुएंसिंग आर्ट, आई मीन हाउ यू जस्ट लुक एट दिस विद योर पर्सपेक्टिव। Well, I was saying that classical art is not something that can one can just, in 1 or 2 years, that one can become a master. It takes years. Here Shashwati ji is sitting here, she's given like 50 plus years. She said she's going to be 70 soon, so she's given at least, I think, 50 60 years of her life to Kathak. And our gurus who are in their 90s, Kumi Ben, Padma Bhushan Kumudini Lakia ji, she's given, 70 years, and Dr. Padma Subramaniam was given like 70 years of their life to art. So, uh, to gain mastery in anything, one has to have consistent effort in that. Whether it is in the field of science or art or business or anything, one has to have consistent effort. It cannot just happen overnight like that. Of course, with the technology, with your Facebook and Instagrams and all, one can get better exposure. But the field that we come from, classical dance, it needs consistent and patient effort. So lot of youngsters who come to join our dance class, we have about 550 students in our institution, from 5-year-old to 60-year-olds. They come and they pursue. We give two styles of, Bharatanatyam and Kathak classes there, and they come. So the first thing we tell them is that they have to, we start with Sanskrit mantras, and then we, you know uh, get them into the art of natya. So one is, so much of ananda is there. There is so much of joy is there in the world that music and dance can immediately give it to people. And we have had students who are like CEOs of companies, who are working in their corporates, who are doctors, who are, and also children, they come and they say, when they come to dance class, they just forget everything. It makes them so calm, and especially for the younger ones, it infuses so much of grace, so much of beauty. How art brings a sense of respect. See, in classical dance, the first thing we teach them is to do bhumi pranam. In no other education, the first step that is taught is how you give honor to the earth, and then connect with God, to the gurus, and to the rest of the world, how we have to respect the world. So that is taught. And how that, those kind of values that come in classical art, one can bring into life. If you're playing characters of Rama, Ramayana or Mahabharata, then through those characters, the students get to experience the emotion. When Draupadi project was given to us, it was given by Srimati Sudhamurti ji, who wanted me to do this project of Draupadi, and I said no. I said, no, it's impossible to connect with such a personality, and I need to study more. So it was a very difficult thing, because our history
our country has got such great personalities, and we have to understand them. It's not just a superficial connection. Each person, each woman in India has given so much to this land and so much to life of learning. And so when we try to understand that, and that's what we even pass on to our youngsters, ki one, there is joy in life, believe. Two, there is difficult because crisis happens day in and day out. So where do we learn from? Through these great people, through the lives of great people. We are complaining we don't have a holiday spot. Rama went to exile for 14 years. So we talk to a lot of youngsters in that way, how art, whether it is literature, music, it is not different from life. And our own life is, um, if it is any production we are doing or just the classes, one should take joy in the very process of it. Art or life is not a product, it is a process, and how we have to enjoy every bit of that process. And so when there is enjoyment, there is a happiness, and happy people can never harm the world. Nice. I want to request the audience, like if you want to ask something, please share your questions with me in a written slip or in a written form, or you can even WhatsApp to the convener of this conference. So please do that. And before getting further, I just like, because I'm like talking to the very like stalwart women, and you all are very successful in your field. So what message actually you want to pass on to the young generation, like me and like all You of asking us, me? for anyone Okay. actually? Okay. What message for the youngsters? Love this life, respect the life, and give yourself, invest your time to something that is much bigger. This world is so beautiful. Our Sanskriti is so beautiful. So connect with. There are three things that one of our dear friend Dr. Krishna has said in Sanskrit for the success of life. Swakarmanam anushtanam chintanam paramatmanah rasananja vibhutinam trayametadhi sadhanam. To pursue a field that you like the most. It can be anything: nursing profession, teaching profession. You want to be a doctor, you want to be an engineer, you want to be a Sanskrit professor, you want to be a student forever. Swakarmanam anushtanam, that which will give you joy, and chintanam paramatmanaha. Now and then we have to go to a source that can inspire us. And that is, in the Western country, when we go, they take us in Belgium and they show, look at our gods. They are so sad. But your gods are so happy, bright, colorful, prosperous. You have a goddess for wealth, you have a goddess for knowledge, you Knowledge. have God for protection, you have everybody who's so prosperous. Your gods are prosperous. We just need to just connect with them, like how Draupadi connected with Lord Krishna. You know, and Rasananja Vibhutinam, with literature, whether it is Kalidasa or whether it is any of Ramayana, Mahabharata, music, art, if you connect with that, these three things are enough. We only have 100 years in this human life. We just need to be happy, be good, and do good. I mean, this is something that we've been following. I'm not saying anything that we are not following. We've been following, and let me tell you, our life is very beautiful. I hope Rajendra also agrees to that. Rajendra should get up. I always say he is my better half and the best half. Thank you. Oh, mom, you want to share something? Yeah. Um, since this W20 is also involved in this session, I have few suggestions actually for making women to go for higher studies. So actually the problem we are facing, because no, we have students after marriage who are having children and all. See, for women, the taking care of others,
parents, children, and all. That is our prakriti. Okay. So we cannot change that prakriti. We should not also. But we have to facilitate. Okay. So how can we make them to manage with these householdings, children, and all with education? Because no, see, just 1 hour back, I talked with someone here. So she had, I know her for long. She had a big dream and she's so talented. But somewhere she had to adjust her dream and go with the flow. Okay. So it should not happen because dream, no dream, and we have to achieve it. We should not leave it. So for that, this government and W20 and all, no, we don't want samatwa. If you ask me, I don't want samatwa with men. No, we need facilities. For example, see, if children are there, we cannot keep them home and come for studies or work. Okay, so at least each and every institution can have a play school. So sometime we can go there and take care of them and continue our work. And also, see, every day when we come to office or education or something, no, there are a lot of things. Okay, a lot of things to do, means household things, cooking, taking care of parents, taking care of children, taking care of the big kid, husband. Okay, so all these things are there. So so how do we manage that? But no, they see, samattu means we don't have, but punching we have same time. 9:30 or 10 o'clock, we all have to punch. But some flexibility in timing. Okay, at least for women. Yeah, seriously, Yeah. seriously, we need. Yeah, some. Uh, Yeah. like though I asked the like student to share some of the questions, बहुत सारे questions उन्होंने share किए हैं, पर एक question जो वरा लक्ष्मी मैम के लिए है वो ये है कि मैम आपने किस तरीके से अपनी personal life, professional life और as an activist अपनी life को balance किया, how you just like balance all these things, like somebody wants to know this. Uh, I don't differentiate between professional life and personal life. Um, I work for the institution for 24 hours and I perform my household chores um, in other than office hours. But professional work is performed for 24 hours. Wow. So I can't differentiate between, there is no Personal and difference for professional. me for Oh. professional life and this one. Thank you so much, And ma'am. that inspiration we got from our ancestors and our former directors, even Srinivas Varkediji, because during his tenure, I remember very well, I used to get messages and emails uh, during 1 p.m., midnight, 12 p.m., 12 noon or 1 p.m. He used to assign us job. So during that time also he used to work and he used to think what kind of assignment should be given to others. So like that we are trained. Our elderly persons trained us. Thank you so much, ma'am. Now I just want to request the chairperson, ma'am, to take this session and like enlighten us with her thoughts and understanding so that we can understand it in a concise manner. So, ma'am. Yeah, ma'am. Respected scholars, young and old, men and women, and on stage and off the stage. It's been fascinating listening to these 4 stories they were building up on the stage. And as I see, I'm left with little to speak. But then I would like to, even before I go ahead, maybe I wish to congratulate the Central Sanskrit University and the entire team for having put together a wonderful idea and bringing it onto stage in these 2 days. So I just thought we should make sense of what probably is the intent Professor Varkedi has when he says Yajnaseni, patience, penance, and power. So it's time for us to articulate this idea of power. What is power here?
My address probably will be meant mainly for the youngsters who are sitting up there and sitting behind, and not probably so much of importance to people sitting in the front because they already know what is power and experience it day in and day out. So, what is this power? Youngsters, any idea what this power is about? So, there are three things, right? Patience, penance, and power. I'm more concerned right now with the idea of power. Power, what I feel, I could be right, wrong. You can dissect. I mean, no, don't take anything for granted for from anybody who says whatever. Idea is to think whether it suits you, whether it makes sense to you. To me, power is the freedom and freedom to choose. So, do you have that freedom to choose? Freedom to choose what you want to do. So, one is about having that freedom, and another is about exercising that freedom. So, do you have it? Do you have it in you to chase your dreams? Do you have the freedom to do what you want to do with your lives? Just think it, give it a moment, and maybe you will know whether you're powerful. That to me is power, right? The ability to make decisions for yourselves. And what I see when you put patience and penance alongside power, I see them largely as tools to this power. And I have seen people using patience and penance as ways to navigate through to this power. And also, very important to know power is not about being in a position of power. It is about positioning yourselves powerfully. What do you think? Right? It is about positioning. What do you mean? What is the difference? See, being in power, you can see some people are actually powerless. They are actually going by the powers that are above them. They are exercised, they're being exercised on them. They may appear powerful, but they might not really be powerful to take their own decisions. So, what I think is to have that power in you to say yes when you want to say yes, to say no when you want to say no. That's what makes you powerful. And that is the positioning that probably youngsters, you need to understand, you need to take it, and then maybe build on to that. And patience and penance. Penance is like what she said. Whatever she has done is a penance. To go, that's a penance. The way she has pursued art. So I know, I mean, she has been she's shared a few things about it, but it is not without any impediments on her way. There probably would have been several of those impediments that she would have faced. But keeping it all aside, because that's the focus, that's the patience, that's the penance. And when you are into that kind of a penance, you don't look around all that and you know where to focus. And that's the penance and the patience. I know the lady sitting next to me for years now, and I know what patience is. She knows how to keep patience, and she has navigated the world using this tool of patience. It's a tool, it's a part of a toolkit. And because that's all, she is also focused on doing something out of her lives. And therefore, patience and penance become a tool in the hands of people who are navigating through so many challenges. There are multiple challenges, especially when a woman comes out. We know we are faced with multiple challenges. Approaches can be different that we have. However, we know there is as far as you have a very clear goal in sight, or you set out one, those who do not have, please go home, do your homework. What I like the most, what I want to do with my life, set out your goal, and then start working towards it. Because challenges are many, and the biggest challenge within which we Indians work is of working within a patriarchy. Whether
we like it or not, whatever we say, it's a patriarchal society. And please note, patriarchy is not hard only on women, it is equally hard on men who are denied the right to cry, who are denied the right to be motherly, who are denied so many things. Therefore, it's important to articulate our reality around us and to see whether we can really for your patient listening, and let's hope we make the world a better place, particularly for women and also for men. Please understand we can do it together. Thank you very much. Yeah. Thank you so much, ma'am, for your very thoughtful and inspiring concluding remarks. And thank you all for this wonderful session. It has really been a very memorable and inspiring experience for everyone. And like a heartfelt thanks to Central Sanskrit University, Professor Neeta Inamdar, Ayushi Dabas, Professor Shivani ji, Professor K. Varalakshmi ji, Nirupama Rajendra ji for their insightful contribution. Thank you, everyone.
आरंभ करने वाले हैं। कृपया सभागार में ही उपस्थित रहें। कृपया लगभग 10-11 मिनट के 2 अंश हैं, वो देखने के बाद हम कथा वार्ता शुरू करेंगे। द्रौपदी।
धीरे धीरे Volume. अज्ञातवास भी बीत गया। Volume, please. लेकिन मेरे धड़क रहे अंतर की ज्वाला नहीं तनिक भी मंद पड़ी। सुनो कृष्ण, ये केश अभी तक खुले हुए हैं मेरे। इन्हीं घने घुंघराले काले केशों से पापी दुशासन मुझे खींचता लाया था राजसभा में। रजस्वला थी, एक वस्त्र में लिपटी, थर थर कांपती, लज्जा भरी। नारी हूं मैं, इसीलिए मुझे ये चरम लांछना सहनी पड़ी। और आज देख रही मैं पांचों पांडव क्षमा, तप, त्याग, मनोबल की बातें करते। आज वे सब कुछ भूल अनादर, क्रोध, प्रतिज्ञा करते हैं संधि की बातें। आह सखा, तुम भी मिल गए उन्हीं से। मेरे लिए न पति है कोई और न कोई पिता, पुत्र, भाई, बांधव हैं। तुम भी नहीं कृष्ण,
मेरी न पुत्रा मधुसूदन न भ्रातरो न च पिता नैव त्वं न च बान्धवा हे कृष्णा, मैं वचन देता हूं, तुम्हारे शाप निष्फल नहीं जाएंगे। न होगी विफल अर्जुन की प्रतिज्ञा। भीम का प्रण। आंसुओं को रोक लो पांचाली, विश्वास रखो। फट पड़े आकाश, सागर सूख कर निर्जल भले हो जाए, विचलित हो उठे पर्वत हिमालय, और गति रुक जाए पृथ्वी की, मगर झूठा नहीं होगा वचन मेरा। हेलो। वस्त्र हरण का एक और था इसके साथ, वो नहीं है क्या? हेलो, वेन ड्राइव में बताएं धर्म क्या है? सत्य क्या है? छा गया पूरी सभा में मौन, था नहीं अवलंब कोई द्रौपदी का। भीष्म ने अस्फुट स्वरों में धर्म की गति को सूक्ष्म कहकर अपनी असमर्थता व्यक्त की। युधिष्ठिर ने आंखें झुका ली। फिर दुशासन उत्तराया, बल से द्रौपदी का दमन करने।
सोनल सोनल मानसिंह भरतनाट्यम, ओडिसी और कुचिपुड़ी जैसे शुद्ध शास्त्रीय नृत्य शैलियों की धनी सोनल मानसिंह ने माध्यम में अद्भुत प्रयोग किए हैं। क्लोज, थैंक यू। Give me a minute. This moderator is too overwhelmed to speak. Just give me a minute. It was amazing, ma'am. I got goosebumps. It was amazing. मैं इस संपूर्ति सत्र की सभापति महोदया और इस संगोष्ठी के संरक्षक आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि को लेकर के मंच की शोभा बढ़ाएं। संपूर्ति सत्र में विशिष्ट अतिथि हेमा जायसवाल जी किन्हीं कारणों से थोड़ा विलंब हो रहा है उन्हें, वो कुछ क्षण में हमारे साथ जुड़ेंगी। यदि सभापति महोदया की अनुमति हो तो हम सत्र प्रारंभ कर सकते हैं। यज्ञसेनी पर केंद्रित यह संगोष्ठी अपने सोपान पर है। नारी शक्ति के प्रमाण के इस यज्ञ की यह अंतिम आहुति है। यह संगोष्ठी सम्मिता है उस यज्ञ वेदी पर जो अपने तेज से ये दीप्तिमान कर रहा है कि नारी हर रूप में शक्तिशाली है, सशक्त है। जब वो रजस्वला शारीरिक पीड़ा के साथ कुरु सभा में खड़ी है तो वो शक्तिशाली है। जब वह गृहिणी रूप में ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को भोजन करा रही है तो भी वो सशक्त है, वो याज्ञसेनी है। यह संगोष्ठी आकाश तक गूंजता मंगलाचरण है कि जब वो पीठ पर ममता बांधती है तो वो शक्तिशाली है, और जब वो तलवार हाथ में लिए रण में उतरती है तो भी वो सशक्त है, वो लक्ष्मीबाई है। यह संगोष्ठी प्रसाद है उनका, जो धीरज धर बाड़े की चौकट नहीं लांघती तो भी शक्तिशाली है, और बंदी बेटे को मुक्त कराने स्वयं घोड़े पर चढ़ जाती है तो भी सशक्त है, वो जीजाबाई भोसले है। यह संगोष्ठी मंत्र है नारी की नारी ममत्व में भी शक्तिशाली है और वीर रस में भी सशक्त है। वो श्री राम सभागार में बैठी आधी आबादी के बारे में चर्चा करती है तो वो शक्तिशाली है, और वो सुदूर किसी गांव में अपने परिवार के लिए रोटी बना रही है, उसकी भूख शांत कर रही है तो भी वो सशक्त है। यह संगोष्ठी का प्रयास सफल हो,
सब शुभ हो, मंगल हो, इस कामना के साथ मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सदस्यों से वैदिक मंगलाचरण के लिए अनुरोध करती हूँ। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनोभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर ईशभ्यो दिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीधेनुर्गोढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भगिनियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस संगोष्ठी के संरक्षक आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी जी एवं सत्र की सभापति महोदया डॉक्टर संध्या पुरेचा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे स्मृति चिन्ह एवं शॉल से हमारी मुख्य अतिथि पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह जी का सम्मान करें। अब मैं उनका आह्वान करती हूँ जिनके लिए नारी सशक्तिकरण केवल अकादमिक परिचर्चा नहीं अपितु जीवन पद्धति है, जिनका मत है कि नारी सम्मान समग्र समाज का सम्मान है। मैं आह्वान करती हूँ इस संगोष्ठी के संरक्षक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी जी का कि वे आएं और इस संगोष्ठी के अनछुए पहलू पर प्रकाश डालें। माननीय। भाई के लिए बहन हमेशा ही सम्मानीय होती है।
भवति यदनुभावात् एडमो कोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जंतुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकल वचन चेतो देवता भारती सा मम वचस निधत्तां सन्निधिं मानसे च। या देवी सर्वभूतेषु कलारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कलारूपिणीं सरस्वतीं वेद्याम् अहं पद्मविभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह रूपेण पश्यामि। अस्यामेव वेद्यां या विमेन 20 इत्यस्य संघटनस्य अध्यक्षरूपेण अधुना देशस्य नाना कोणेषु द्विशताधिककार्यक्रमान् निरूढवती तत्तादृशीं डॉक्टर संध्या परेचा महाभागाञ्च नमामि। मम पुरस्तात् केवलं द्रौपदी ही एव पश्यामि। मेरे सामने आज 2 दिन की याज्ञसेनी के उपासना के बाद पूरे सभा में याज्ञसेनी दिख रही है। आप सब याज्ञसेनियों के चरणों में मेरा नमस्कार। हर एक नारी या तो याज्ञसेनी जैसे जीवन में कुछ कष्ट कुछ कृच्छ देखती है और करती है, अनुभव करती भी है। उसकी मात्रा अलग अलग हो सकती है, उसका परिणाम भी अलग हो सकता है। लेकिन द्रौपदी ने कैसे जीवन को देखा, कल 2 दिन से हम केवल आदर्श नारी के रूप में नहीं अपितु हर एक नारी को कैसे अनेक संघर्ष के समय में अपने आप को याज्ञसेनी के रूप में रखना है, उसको हमने देखा है। अब नारी विमर्श का एक नया युग आया है। भारत विश्व गुरु बन रहा है। इस समय में भारतीय एक अपना एक नारी विमर्श है। यह नारी विमर्श पाश्चात्य देशों से स्वीकृत नहीं है, ये हमारा ही नारी विमर्श है। रामायण को कुछ विमर्शकों ने सीतायन के रूप में देखा है, महाभारत को याज्ञसेनी कथा के रूप में देखा है। यदि हम देखेंगे भारत के सभी वाङ्मय में हम जिस रूप से हम देख सकते हैं वैसे नारी का एक शक्ति का आविष्कार हम देख सकते हैं, लेकिन वो कक्षा में सीमित रह गई है। कक्षा में हम बहुत बोलते हैं, बहुत बात करते हैं, जिस तरह के संगोष्ठियों में बहुत तालियां बजाना हम जानते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से क्या हम हमारे समाज में, हमारे शिक्षा व्यवस्था में, हमारे परिवारों में क्या हम उस दृष्टि को अपनाया है? केवल महिला सम्मेलन में महिलाओं को यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः इस वचन से तुष्टीकरण करना है या हमें आचरण में लेके आना है? हर एक क्षण में क्या मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी सहोदरी, मेरे सखियां और मेरे मित्र, मेरे सहोद्योगी, क्या इनको हमारे एक समर्थ दृष्टि से वो अपनी योग्य है, सभी स्थान प्राप्त करने के लिए, सभी कार्य करने के लिए वो समर्थ है, योग्य है, ऐसा मैं देखा हूं या देख रहा हूं?
क्या समाज में सभी लोग अपनी बेटी यदि रात को देर से आ रही है, क्या केवल उसकी सुरक्षा का भाव है या दूसरी दृष्टि भी है उसमें? हम समाज में कैसे एक परिवर्तन लाना है, इस दृष्टि से एक चिंतनीय विषय में हमारे विश्वविद्यालय में जितने भी महिला छात्र हैं ना, जो अनेक विभिन्न परिवार के संस्कृति से अनेक भाषा परिवेश से आते हैं, उनके सभी केंद्र में सभी परिवार में समान दृष्टि तो नहीं होगी, लेकिन क्या उनको समान अवसर मिला है? क्या विश्वविद्यालय में आने के बाद उनको समान अवसर दी जाती है? उनके ट्रीटमेंट में इसको ये बहुत सतर्क रहता हूं। जो ट्रीटमेंट है वो बाहर व्यवहार से नहीं होता है, वो ट्रीटमेंट मन से होता है। मैं कैसे उनको देख रहा हूं, किस रूप से, किस ढंग से उनको देख रहा हूं, इसको यदि परिवर्तन करना है तो शायद हमें याज्ञसेनी को बार बार याज्ञसेनी की स्मृति करनी है, क्योंकि जैसे कृष्ण ने याज्ञसेनी को देखा है, जैसे पांडवों ने याज्ञसेनी को देखा है, और जैसे महाभारत में अनेक जन याज्ञसेनी को देखा है, लेकिन एक याज्ञसेनी को अनेक रूप में, मतलब अनेक पुरुष, अनेक समाज को कैसे अपने आप को उन्होंने दिखाया है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो याज्ञसेनी का नाना आयाम है, उस सभी आयामों को देखने का अवसर हमें इन दोनों दिवस में मिला है। शायद मैं इस तरह के कार्यक्रमों में मुझे बहुत सीखने को मिलता है। सो आई जस्ट टेक इट एज अ वेरी पर्सनल लर्निंग। ये मेरे लिए कोई संगोष्ठी नहीं है, विश्वविद्यालय का संगोष्ठी नहीं है। ये मेरे लिए कार्यक्रम किसी और का चलता रहेगा इस तरह का कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम मेरा हृदय से, जो भी हम करते हैं वो हृदय से करते हैं। तो हमने कुछ दिन पहले ऐसा हमने सोचा इस कार्यक्रम को करना है, लेकिन किस ढंग से करना है मेरे टीम के साथ मैंने शेयर किया। मैं मेरे प्रोग्राम डायरेक्टर मधुकेश्वर को बुलाया और कुछ हमारे महिला सहोद्योगीगण हैं उनको बुलाया। देखिए हम ये करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? तो सबने अपने अपने आइडियाज को जोड़ा और बाद में हमने सोचा इसको किस ढंग से उसको पूर्ण सजाना है, तो सबको इसमें शामिल करना है। शायद केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के इतिहास में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के इतिहास में पहला महिला सम्मेलन हो रहा है। एक जगह में मैं हमारे महिला श्रद्धेय महिला सहोद्योगियों को और छात्रों को देखने का अवसर मुझे मिला है, और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और मैंने ये भी खुशी देखी है उनके, क्योंकि जब मैं परिसर जाता हूँ वो ड्यूटी में रहती है, सभी को ड्यूटी दिया जाता है, तो इसलिए वो हमेशा या तो वो दूसरों को परोसती रहती है या तो वो सैल्यूट करती रहती है। पहली बार वो सैल्यूट लेते हुए और पहली बार भोजन परिवेश को स्वयं सम्मान लेते हुए यहाँ महिला को देखते हुए हमारे सब परिवार, मतलब हम सब खुश है, क्योंकि हमने भी कुछ हमें भी कुछ सेवा करने का अवसर मिला है। तो आज इस सम्मेलन के एक अंतिम क्षण में ये समाप्ति नहीं है, यह समाप्ति नहीं है। इस बात को इस कार्यक्रम के प्रारंभ से अंत में जाने के वक्त में श्रीमती डॉक्टर प्रतिभा राय जी ने मुझे बोला, ये मेरा संदेश है। उन्होंने कहा ये अंत नहीं है, ये निरंतर है, इस प्रारंभ है, इसको आप करते रहना। क्योंकि हम अंत से अंत करते हैं, वो अंत से आरंभ करती है। उनकी कहानी अंत से आरंभ होती है और कभी अंत नहीं होते हैं। तो आज इस निरंतर कहानी जो याज्ञसेनी की है, और मैं चाहता हूं जब संघर्ष का समय आएगा तो याज्ञसेनी को खड़ा होना है, जब संघर्ष नहीं है तब भी याज्ञसेनी को खड़ा होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं इस 2 दिन की इस यात्रा को आप यदि देखेंगे तो कला में आज श्रद्धेय डॉक्टर सोनल मानसिंह जी यहाँ पर है,
जो अपने आप को एक आधुनिक काल में केवल कला उनका एक माध्यम है, लेकिन उन्हें नारी शक्ति को जगाया है। कला एक माध्यम है, उसमें आप हाउ डू यू एक्सप्रेस, दैट इज टोटली डिफरेंट, बट व्हाट आर यू एक्सप्रेसिंग, द वेज एंड व्हाट शी कम्युनिकेटेड। आपने आज देखा होगा, लास्ट में उनके एक झलक हमने देखा, लेकिन हमारे देश के प्रतिष्ठा है वो राज्यसभा में हमारे देश की कला, संस्कृति, संस्कृत और महिला को प्रतिनिधित्व करने वाली महान शक्ति है। ये हमारा सौभाग्य है। आज आप हमारा सम्मान बढ़ाया। इस कार्यक्रम के बारे में जब चर्चा करने के लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के यहाँ गया था, तो उन्होंने पूछा, धर्मेंद्र जी ने पूछा, अंत में कौन आ रहा है समाप्ति करने के लिए? तो आपका नाम आ गया, तो बहुत प्रसन्न थे। बहुत अच्छा किया आपने। तो वो बहुत प्रसन्न रहे, क्योंकि शिक्षा के रूप में वो पूर्ण रूप से, अखंड रूप से जब हम इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये केवल अब 3 साल से हम लगातार नई शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करने में लगे हुए हैं। कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं कार्यक्रम में। इसके पूर्व संध्या में हम एक W20 के साथ, संगीत नाटक अकादमी के साथ याज्ञसेनी का एक योजना बनाई। तो उसने श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उसको स्वागत किया और स्वयं उपस्थित रहे। इन 2 दिनों में खास करके जो याज्ञसेनी को केंद्र बनाकर हमने यात्रा किया, उसमें I was really moved to be part of last session. जो अंतिम सेशन में आप सबने देखा होगा यहाँ कैसे संघर्ष जीवन में आता है, और कैसे उसको कमिटमेंट, निरुपमा जी ने बताया। तो द डे ऑफ द डेथ ऑफ हर फादर और पेरेंट्स, she was committed. She was really committed for the cause she was taking in life. She danced on the stage. तो ये है कमिटमेंट के लेवल, केवल एक नारी ही कर सकती है। क्योंकि मेरे जैसे, शायद क्योंकि आप मुझे और मेरे जैसे पुरुष को नहीं जानते हैं, इसलिए मैं एक गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि आपका स्वभाव अलग है। तो हम इतना कमिटमेंट होना मुश्किल है, इस कमिटमेंट के साथ काम करना मुश्किल है। लेकिन उसमें ये भी हमें दर्शाया है, बहुत महिलाओं ने अपने जीवन में कैसे परिवार ने उनके साथ खड़े हो गए, कैसे समाज उनके साथ था, और कैसे वो अकेले नहीं रही। ऐसा नहीं कि संघर्ष के वक्त में अकेली है। ये भारतीय नारी तत्व का सम्मान है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, ये नहीं है कि पाद पूजा करो, ऐसे पाद चरण स्पर्श करके, वही नहीं है, वो भी है, लेकिन ये भी है जहां नारी कुछ करना चाहती है, समाज, परिवार उनके साथ है। ये भारत में नारी तत्व का उपासन हो रहा है। लेकिन उसी कालखंड में हमें लगता है कि हृदय में एक आघात होता है। क्या हम संस्कारों को भूले हैं? कहीं ना कहीं मणिपुर में भी कुछ घटना घटी, तो मुझे लगता है कि मैं उसके कारण हूं। मैं कारण हूं क्योंकि मैंने ऐसे देश को नहीं बनाया, ऐसे वातावरण को क्रिएट नहीं कर पाया, क्योंकि हम नारी का सम्मान रख सके। घटना के बाद मैं विरोध करता हूं, उसे कुछ होने वाला नहीं है। घटना न घटे, इसके लिए हमने क्या किया है? ये केवल पुलिस सिस्टम से नहीं होता है, पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं होता है, ये संस्कारों से होता है। जिस देश में कन्या का पूजा किया जाता है, जिस देश में माता की पूजा की जाती है, जिस देश में सहोदरी के रूप में सुभद्रा की पूजा की जाती है, चारों ओर यदि हम देखेंगे, भारत में दुर्गा का अनेक रूप से पूजन हो जाती है, लेकिन पूजन वास्तविक रूप से एक यहाँ नारी का सम्मान समाज में और वर्किंग प्लेस में, और इस तरह के केवल सम्मेलनों से नहीं होता है, लेकिन वो होना चाहिए। उसके लिए प्रेरणा के रूप में हम कुछ पाठ यहाँ सीखा है, उसको हमारे
कम से कम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एक सुसंस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में मैं बहुत खुशी से आपसे ये बोलना चाहता हूँ, हमारे विश्वविद्यालय में ऐसे कहीं केसेस नहीं है। हमारे विश्वविद्यालय में ऐसे केसेस नहीं है जहां महिलाओं को तकलीफ हुआ है। मतलब हमने राज्यसभा में उत्तर दी है, और हमारे आत्महत्या के केस नहीं है। ये संस्कृत का प्रभाव है, मतलब संस्कृत अध्ययन का प्रभाव है। हमारे बच्चे इतना कमजोर नहीं है। मैं राज्यसभा में उत्तर दे के आया हूं अभी। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं भारत के अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों में यदि हम A++ है तो A++ है। तो याज्ञसेनी हमारे साथ रहेगी, और पूर्ण वर्ष हम आगे जो भी कार्यक्रम करेंगे उसके याज्ञसेनी का अनुरणन रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद कुलपति महोदय। इस सभागार में उपस्थित हर एक नारी यदि याज्ञसेनी है तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और संगीत नाट्य अकादमी का ये मंच कहीं ना कहीं कृष्ण अवश्य बना है। अब इस संगोष्ठी की प्रतिपुष्टि हेतु मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पूरी परिसर से आचार्य मीनाती रथ जी को आमंत्रित करती हूँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। इस विद्वानों की और विदुषियों की सभा में क्या मैंने ऑब्जर्व किया है, इसके बारे में बोलने के लिए मुझे 2 मिनट समय दिया गया, लेकिन 2 दिन अगर दिया जाएगा ना तो भी मैं बोल नहीं पाऊंगी, खत्म नहीं होगी। इतना अनुभूतियां मुझे यहाँ हुई है, इतना अच्छा वातावरण को मुझे देखने को मिला है, ये मैं इतने कम समय में कैसे बोलूं। यहाँ हमारे सामने जो मंच है, यहाँ पर जो उपस्थित विभूतियां हैं भारत के, हमारे उड़ीसा से भी है मैडम उनको मैं प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर उनको पहचानने वाले जो हमारे डायनामिक पर्सनालिटी वाले जो हमारे कुलपति बैठे हैं, उनको भी आभार व्यक्त करती हूँ 2 शब्द बोलने के लिए, बुलाने के लिए। और मैं क्या बोलूं, शाह ने जो बोला वो तो सब पहले बोल दिया गया है। सचमुच यहाँ याज्ञसेनिया का सभा है। हर नारी एक याज्ञसेनी ही होती है, उसके जीवन की एक कहानी होती है। जो नारियां विदुषी होती है, जो नारियां रूपवती होती है, और जो नारियां खासकर आगे बढ़ना चाहती है, उसके लिए तो जीवन सचमुच मुश्किलों से भरा है। फिर भी जो नारियां आगे आते हैं वो सबसे आगे चले जाते हैं। यहाँ मैंने ऐसी नारियों की मुझे परिचय हुआ है जिनके बारे में मैं क्या बोलूं। मैं तो, मेरा वाणी अवरुद्ध हो रही है। प्रतिभा जी जो मेरे सपने में थे, सचमुच हमारी उड़ीसा की है, उनका मैं फैन फॉलोइंग रही हूँ, लेकिन उनके यहाँ साक्षात्कार करने के लिए मुझे सुजोग मिला, उनसे बातें हुई। एक लेखिका के जीवन की जो अनुभूति उनकी है, वही अनुभूति भी कहीं ना कहीं मेरी है। मैं जितना लेख लिखी हूँ, मेरा जितना लेख है वो संस्कृत में है, इसीलिए मैं संस्कृत की एक लेखिका हूँ। लेकिन हर लेखक की जीवन एक जैसी होती है। यहाँ मुझे एक विशेषत्व मिला। मैं बहुत जगह गई हूँ, भारत की बाहर भी बहुत सारे समितियों में मैं काम किया है, संगोष्ठियां भी अटेंड किया है, लेकिन सबसे यहाँ मुझे एक
स्वतंत्र अनुभूति हुई है संस्कृत महिलाओं की इस संगोष्ठी में। यहाँ देखिए कितनी शांति है, खासकर हमारे बच्चों जो हमारे नेशन के ट्रेजर होते हैं, ये लोगों को देखिए कितना कल्चर है, ये हमारे ट्रेजर है, ये कितना कल्चर है। हर देखिए हमारी संस्कृत महिलाओं को कितना कल्चर है। इनसे बढ़कर कोई कल्चर औरत आप विश्व भर ढूंढे आपको कहीं नहीं मिलेगी। प्रतिभावान, प्रतिभावती, विदुषी, सब सारे गुण जो औरतों को, जो एक स्त्री का पुराणों में, वेदों में वर्णित की गई है, ये सारे विभूतियां इनमें होती है। इनके वाणी में सरस्वती होते हैं, इनके वचन में बृहस्पति होते हैं। फिर भी कितनी विनम्रता से ये सारे संगोष्ठियों में इन्होंने अपना व्याख्यान रखा, ये तो दिल को अभिभूत कर देती है, चकित कर देती है। हमारे बच्चों का देखिए कैसा कल्चर है हमारा। कल्चर को किसी ने कल्चर बना दिया, ये तो हमारे बच्चे हैं। एक भी बच्चे का आवाज नहीं है। किसी भी संगोष्ठियों में जाओ, कितना यहाँ विशृंखलाएं होती हैं, पर यही तो हमारा अवदान है। ये बच्चे, हमारे बच्चों को हमने बनाया है, इन बच्चों को हमने पढ़ाया है, तो ये हमारे संपत्ति है। इन बच्चों का यहाँ देख करके मुझे लगा हम लोग पिछड़े हुए हैं, क्योंकि कितने सुंदर ये प्रस्तुति करते हैं, कितने सुंदर ये बोलते हैं। यहाँ जब आकर ये उपस्थापित करते हैं, कितना मैं इम्प्रेस्ड हूँ उनसे, बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ। उनका ये प्रिपरेशन, उनका ये जो इमेजिनेशन सचमुच हम लोगों से कहीं आगे है, कहीं आगे है। यहाँ कला की बातें होती है। कला तो भारतीय संस्कृति की आत्मा है, संस्कृत तो इस देश की आत्मा है। समय खत्म हो रहा है, बहुत कुछ बोलना बाकी है, और कभी, आज नहीं फिर कभी मिलेंगे। हमारे माननीय कुलपति जी जो जब कभी हमारे विद्यापीठ में, हमारे विश्वविद्यालय में जाते हैं, सचमुच बालिकाओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। इतना प्रेम, इतना श्रद्धा, इतना भक्ति करते हैं, इनके पीछे पीछे फोटो खींचते रहते हैं। मैं बोलती हूँ हटो हटो, नहीं नहीं करने दो, हमें मैडम, हमें फोटो लेने दो। ऐसा मैं क्यों, सर तो बार बार आते हैं, नहीं फिर ये सुजग हमें मिलेगा कि नहीं। देखिए एक जो सबसे बड़ा अथॉरिटी है, उनके लिए कितना आत्मीयता है बच्चों का। ये तो हमारा संपत्ति है, ये संस्कृत की संपत्ति है। इसको देखने से जी भर जाता है, आगे कुछ बोला नहीं जाता है। और यहाँ कला की बात होती है, पुराणों में बहुत कला के बारे में बताया गया है। सुबह सुबह मैं प्रश्न कर रही थी यहाँ पैनलिस्ट को कि कलाएं के बारे में सिर्फ हम आगे को देखते हैं, अभी वर्तमान कालीन को अगर प्राचीनता को इसमें जोड़ दिया जाए तो कला की महनीयता और भी बढ़ जाएगा। क्योंकि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा है कला नाम प्रबरम चित्रम, तो चित्रकला के बारे में, नृत्य कला के बारे में, संगीत कला के बारे में, सारी कलाओं का वहाँ जितना सुंदर वर्णन है, वो सब मैं मैडम की नृत्य में देख चुकी हूँ। वो जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने अनुसंधान किया है, मैडम की हर जो आंखों में, उनके डांस में, वही तो सब वहाँ संस्कृत में बने थे। वो सब मैंने प्रत्यक्ष देखा है, उन पर रिसर्च किया है। आज उस देवी को यहाँ प्रत्यक्ष रूप से देख लिया, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। और क्या बोलूं, मैडम तो बैठी है, मैडम के बारे में भी कला की वही बातें हैं। मैडम जो कला की यहाँ बातें हुई, मुझे मेरा पति प्रश्न करते हैं, अब तो इतना लिख चुकी हो, इतना प्रमोशन सब हो गया, और चाहिए नहीं, छोड़ दो पढ़ाई को, शरीर खराब हो रही है। मैं कहा आप मुझसे क्या मेरा जीवन को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं? सचमुच संस्कृत के लिए इतना प्रेम है, इतना प्रीति है, लेकिन मैं तो यहाँ आकर के कलाकारों की जो डेडिकेशन, कलाकारों की जो
इस संस्कृत के लिए जो प्रीति, ये देखकर तो मेरा बंद हो गया है होंठ। मैं क्या प्रेम करती हूँ संस्कृत को, क्योंकि मुझे पैसा मिलता है। नहीं, पैसा तो बात नहीं, मैं तो रात के 10 बजे 12 बजे तक बैठ करके लिखती हूँ अपना, इतना किताबों के भंडार बनाया है, लेकिन इनके समर्पण तो थोड़ा ही मेरे पास नहीं है। मैं निरुपमा जी, सोनाली मैडम के और ये मैडम, इन सब से बहुत प्रभावित हुई हूँ। शायद आगे हो गया है। अभी मैं क्षमा चाहती हूँ, बहुत कुछ बोलना था आगे, तो हमारे माननीय कुलपति जी ने शुरुआत कर दिया है, वो तो आगे चलेगी, हमें अवश्य इसमें बोलने की मौका मिलेगी। हमारा वेद व्यास ने एक बात नहीं बोलूंगी तो शायद मैं ऋणी रह जाऊंगी सर के, क्योंकि मैंने महाभारत को 30 साल से पढ़ा रही हूँ, 32 साल से पढ़ा रही हूँ, लेकिन महाभारत को लिखा है भगवान व्यास देव ने। त्रिभिवर्षोई सदोत्थाय कृष्ण द्वीपायन मुनि महाभारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम। 3 साल से बनाया है महाभारत को, मैं पढ़ रही हूँ, किंतु महाभारत का ये जो शुरुआत हुआ, ये बहुत ही आगे चलेगा। महाभारत को लोकप्रिय बनाना है। कल मंत्री जी जो बोले हैं, ईश्वर को इस धरा पर अवतरित करना है, किस माध्यम से? इस संस्कृत के माध्यम से ही लाना है उनको। तो मैं अपने वक्तव्य को अभी विराम देती हूँ। आगे आप लोगों का बहुत बहुत आभार, मेरे बच्चों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। इससे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मान सिंह जी उपस्थित हैं। आदरणीय, आप स्वयं में भारत की कला और संस्कृति की ध्वजवाहिका हैं। रस, रास और लास कैसे नारी की सशक्त और अभिन्न रूप है, आप उसका उदाहरण हैं। आप एक जानी मानी भारतीय शास्त्रीय नर्तक और भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली की गुरु हैं। आप भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की नामित सदस्य हैं। आप भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री एवं 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। आदरणीय, मुझे क्षमा कीजिएगा, इंटरनेट में 3-4 जगह जी जी तो जी आप आइए जी। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति बुद्धि मातृ रूपेण संस्थिता, विद्या मेधा प्रज्ञा बुद्धि रूपेण संस्थिता, कला रूपेण संस्थिता, नृत्य रूपेण संस्थिता, संगीत रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबका नमन करती हूँ। प्रोफेसर वरखेड़ी जी को सादर नमस्कार प्रेषित करती हूँ। वरखेड़ी जी, आपको नमस्कार। और मेरी प्रिय संध्या को, मैं उसको डॉक्टर संध्या पुरेचा नहीं कह सकती हूँ, बहुत प्यारी बच्ची हमारी, और इतनी बड़ी हो गई है, उसका मुझे अत्यंत आनंद है, अपार हर्ष है। तो W20 का इंसेप्शन था औरंगाबाद में, उसमें भी आपने मुझे याद किया था, आज फिर से याद किया है, और संस्कृत यूनिवर्सिटी से जुड़ने का फिर से एक बार लाभ मिल रहा है। प्रोफेसर कुटुंब शास्त्री थे वगैरह उस वक्त, और संगीत नाटक एकेडमी की तो मैं चेयरमैन भी रह चुकी हूँ, वो मेरा पुराना घर है। तो ये तीनों का जो त्रिवेणी संगम है, उसमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत 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 धन्यवाद। याज्ञसेनी जैसे आपने कुछ ये अंश देखे, वो एक्चुअली मेरे 1994 में 1994 द फर्स्ट प्रीमियर ऑफ द्रौपदी
which was at Kamani Hall on 29th and 30th April. The Vice President of India, then Atal Bihari Vajpayee, Advani ji, Murli Manohar Joshi ji, they were all there. Why I say this is that those were the days when political leaders, the highest leaders, would attend performances at a simple invitation. That kind of political culture has to come again. Yes. I had brought some notes from my director's note, my choreographer's note, my concept, but I think it's a bit long, and I just want to share a few glimpses of why Draupadi. It's not only Mahabharata. I'm sure it has been said, and I repeat it. महाभारत में जो नहीं है वो कहीं नहीं है, जो दुनिया में है वो सब कुछ महाभारत में है. But who is the Naika? The one and only Draupadi. She is also among the Panchakanyas. Ahalya, Draupadi, Kunti, Tara, Mandodari, tatha Panchakam na smare nityam mahapatakanasanam. ऐसी 5 पंचकन्या में भी वो हैं. वो महाभारती हैं. She is the ultimate, the highest heroine of Bharat Desha. Sati alag hai, Devi alag hai, Kumari alag hai, Kanya alag hai. इन शब्दों को भी हमें समझने की आवश्यकता है. आज मैं वो नहीं समझाऊंगी, दोबारा बुलाएंगे तब समझाऊंगी. द्रौपदी महाभारती है, द्रौपदी द्रुपद कन्या है. द्रुम वेजिटेशन, लश वेजिटेशन का जो जनपद है वहां की वो राजकुमारी है. पांचाल देश की कन्या. याज्ञसेनी, यज्ञ से जिसका उद्भव हुआ. वैसे देखा जाए तो every being, every sentient being, पशु, प्राणी, पक्षी, मनुष्य, सब उसी यज्ञ से उत्पन्न होते हैं जहां स्त्री और पुरुष का आनंद संगम होता है. बट ये आहुति एक विशेष रूप से पड़ी, एक विशेष कार्य के लिए पड़ी, विशेष कारण से पड़ी. उस आहुति के परिणाम स्वरूप द्रौपदी का जन्म हुआ. याज्ञसेनी उत्पन्न हुई और उन्होंने अपने चरितार्थ किया पूरे जीवन को. किस तरीके से आपने देखा है, सुना है. मेरे मन में याज्ञसेनी द्रौपदी वर्षों से मेरे दिमाग पे सवार थी, मेरे कंधे पे सवार थी, मेरी पीठ पे सवार थी. उसका चरित्र इतना अद्भुत है, आकर्षक है, लेकिन थोड़ा सा उस वय में 20, 25, 30, 40 किशोरावस्था में द्रौपदी एक अलग दिखती है हमें. युवावस्था में अलग दिखती है. प्रौढ़ावस्था में थोड़ा थोड़ा कहीं समझ में आने लगता है. लेकिन द्रौपदी को पूरा जानना श्री कृष्ण के अलावा किसी से संभव नहीं है. ये मानना पड़ेगा. You can see her in bits and pieces, but her totality eludes and escapes us. She is such a character. वो क्या है? श्री कृष्ण की सखी है. इससे ज्यादा क्या हो सकता है? कृष्ण जिनके अष्टपटरानियां, असंख्य और पत्नियां, गोपियां, एडमायरर्स, भक्त, ये सारे सखी कौन? एक द्रौपदी. आपको शायद सखा भाव, सखी भाव का इतना परिचय ना भी हो सभी को, लेकिन वो एक बहुत अद्भुत रिलेशनशिप है, अद्भुत संबंध है.
सखी और सखा पूरक हैं। बिना कहे श्री कृष्ण कुड अंडरस्टैंड द्रौपदी कहाँ है, कैसी हैं, क्या कर रही हैं और उनके लिए क्या करना है। जो एक शब्द मात्र से तुम भी अब नहीं मेरे कृष्ण, न च त्वं न च मे पतयो सपतय संति न पुत्रा मधुसूदन। आखिर में जब कहती है तुम भी अब मेरे नहीं कृष्ण, तो वो तीर उनके हृदय में जाता है। वो वचन देते हैं कि युद्ध होगा, तुम्हारे अपमान का बदला लिया जाएगा। योर इंसल्ट विल बी अवेंज्ड इन फुलनेस। काफी प्रश्न उठे हैं। आजकल का जमाना ऐसा है कि प्रश्न ही प्रश्न है। एक तरीके से सेक्युलरिज्म की जड़ ऐसी बैठ गई है कि वी आर अनेबल टू लुक एट आवर ओन थिंग्स इन आवर पर्सपेक्टिव। हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। ज्यादातर बात करती हूँ जो एटमॉस्फेयर है अभी। गूगल में क्या आया, इंटरनेट में क्या है, व्हाट्सएप में कौन से मैसेजेस में क्या लिखा है, वो कृष्ण को क्या कहते हैं, भगवत गीता पे क्या टिप्पणी करते हैं, द्रौपदी पे क्या टिप्पणी हो रही है, सब चलता है। उसमें से हम अपना सार निकालते हैं। लेकिन मेरी अंदर की आंखें, मेरे प्रज्ञा चक्षु मुझे क्या दिखाते हैं, उस पे हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। इसीलिए द्रौपदी को समझना श्री कृष्ण के अलावा संभव नहीं था। इसीलिए महाभारत का युद्ध हुआ। सब कहते हैं चाहते, कृष्ण चाहते तो युद्ध नहीं होता। कृष्ण क्यों चाहते ऐसा? कृष्ण चाहते थे। हम कृष्ण को समझ नहीं पाते हैं, हम कृष्णा को समझ नहीं पाते हैं। उनका जन्म का नाम कृष्णा था, कृष्णा। इसीलिए जब प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में भूल होती है तो कृष्णा, हे कृष्णा, रामा, तो रामा कहने से तो ये स्त्रीलिंग हो गया, कृष्णा कहने से तो द्रौपदी हो गई। काली को भी कृष्णा कहते हैं। तो एक इसी छोटी सी बात है, उच्चारण शुद्धि की बहुत आवश्यकता है। हम किसको पुकार रहे हैं वो तो जाने कि मुझे पुकारा जा रहा है। कृष्ण को पुकार रहे हैं, काली को पुकार रहे हैं, द्रौपदी को पुकार रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं? राम को पुकार रहे हैं, रामा को पुकार रहे हैं, रमा को पुकार रहे हैं, लक्ष्मी को पुकार रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं? एक दिस इज एन असाइड। द्रौपदी की बात कर रही हूं कि इतनी सवार होगी मेरे सर पे कि आई हैड टू bow down to the pressure she exerted on me। और जो बचपन से देखा सुना, महाभारत पढ़ा, गुजराती में, हिंदी में, संस्कृत का थोड़ा थोड़ा पढ़ा, आगे बढ़ाया उसको। लेकिन इन सब में मुझे जो बात लगी कि भगवान वेदव्यास, सप्त चिरंजीवी में एक तो हैं भगवान वेदव्यास हैं, जिन्होंने उपनिषद ये वो सब क्या नहीं किया। लेकिन मेरी भी अपनी सोच है। जो आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट की बात करते हैं, उनको बार बार ये समझना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि वेदव्यास की द्रौपदी वेदव्यास की है, जयदेव की राधा जयदेव की है, श्रीमद् भागवत के श्री कृष्ण वो श्रीमद् भागवत के हैं। जब मैं उसके बारे में सोच रही हूँ तो सोनल की द्रौपदी कौन है, क्या है, ये यदि नहीं हमारे पास बन के आता तो निष्फल है, निरर्थक है हमारा प्रयास। तो ये जो परंपरा है सोचने की, द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, यूजिंग योर इंटेलेक्ट, चबाना पड़ता है। नॉट टू से कि हम नो, वेदव्यास जी पूज्य हैं, लेकिन मेरा मन कहता है कि देयर आर सर्टेन स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स। शब्दों के बीच में जो अंतर एक होता है, अंतर यानी डिस्टेंस,
वो हम लोगों को समझने की आवश्यकता पड़ती है। मुझे मैंने जो पढ़ा उसमें से मुझे ये लगा कि वरमाला, जयमाला, वरमाला नहीं जयमाला अर्जुन के गले में पड़ी। वहां दुर्योधन सहित सारे राजा उठ खड़े हुए। एक ब्राह्मण, हमारे होते हुए एक ब्राह्मण ले जाएगा, और युद्ध छिड़ा। धृष्टद्युम्न ने महल के पिछले दरवाजे से युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव को भेज दिया, आगे जाओ जाओ जाओ। यहाँ भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न, द्रुपद सब लड़ने लगे, और अंत में भीम, अर्जुन, द्रौपदी सहित वो भी रवाना हो गए। कहाँ? जहां कुम्हार टोला में रह रहे थे, छद्मवेश में, इनकॉग्निटो। अब वहां पहले ही पहुंच चुके हैं युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव। कुंती ने पूछा होगा निश्चित रूप से, जो वेदव्यास जी नहीं लिखे हैं, कहाँ है बाकी? तो उनको कहा गया ये हुआ। कहते वक्त युधिष्ठिर जो सबसे बड़े भाई हैं, उनके मन में क्या विचार आए होंगे कि मैं अभी तक अविवाहित हूं। अर्जुन का विवाह परम सुंदरी द्रौपदी से हो गया, बहुत आनंद की बात है। लेकिन परहैप्स कुंती ने एज मदर, माता सब समझ जाती है। तो जब भीम, अर्जुन, द्रौपदी वहां पहुंचे, और मैं सोच रही थी कि जब मेरा विवाह हुआ तो मंगल फेरे लेने के समय पीछे पीछे चलते हुए मन में क्या उमंग, क्या उल्लास, क्या उत्साह, क्या भाव रहे होंगे। वो भाव द्रौपदी के मन में अर्जुन के पीछे चलते हुए नहीं रहे होंगे क्या? क्यों, कब कब मुझे अपने आलिंगन में लेंगे? और जब चलते 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 पहुंचे हैं, और जब अर्जुन ने कहा माँ देखो हम क्या लाए हैं, अब ये भी क्या लाए हैं, भिक्षा के लिए थोड़ी ना गए थे, लेकिन क्या लाए हैं। तो कुंती ने अंदर से कहा बराबर बांट लो, भुंगते तो समेत सर्वे। और ये बात फिर चरितार्थ करनी पड़ी। माँ का आदेश है, शब्द वापस नहीं जा सकते, आज्ञा का पालन होना चाहिए, वगैरह वगैरह। द्रौपदी की उस वक्त अवस्था क्या रही होगी, ये बैठ के मैंने सोचा। बिजली पड़ी होगी उस पे कि नहीं, स्तब्ध हो गई होगी कि नहीं, ये क्या सुना मैंने। और युधिष्ठिर और बाकी चारों भाई उसको निहार रहे हैं, तो द्रौपदी के मन में क्या शंका, कुशंका, तर्क वितर्क जन्मे नहीं होंगे। और ये द्रौपदी, उसको मनाना पड़ा। स्वयं भगवान वेदव्यास आए, द्रौपदी का विवाह पांचों से हुआ। कैसे एक नवविवाहित कन्या ने ऐसी विषम क्षणों में किस तरीके से उसको झेला और फिर निभाया। डिवोर्स करके भागी नहीं, निभाया। और कैसे निभाया? तो ऐसे ऐसे काफी क्षण हैं कि जब वो कुरु सभा में पूछती हैं, बताएं धर्म क्या है, सत्य क्या है, नीति क्या है। कोई समझा नहीं सका। भीष्म ने आंखें नीचे
तक फोन आ रहे हैं, कुछ पत्र आए हैं। देखिए, काफी एमपीज ने कहा कि जब द्रौपदी पूछ रही है, मेरे उसमें है प्रोडक्शन में, धर्म क्या है, सत्य क्या है, नीति क्या है, बताएं आप सब। तो कह रहे कि हम we were sliding under our seats, we could not look at the stage, हम रंगमंच पे देख नहीं सके। हम जाकर अब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इन प्रसंगों पे, इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। हमारी आंखें खुल गई। अब जो भाषण से, सेमिनार से, वक्तव्य से हासिल होता है, उससे कहीं ज्यादा ऐसे प्रेरणाजनक कार्यक्रमों से होता है कि जो प्रश्न समाज को पूछे जाने चाहिए। आज आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, मणिपुर तो हर रोज हो रहा है, होता आ रहा है। दुख की बात तो ये है कि भारतवर्ष की संस्कृति आक्रांता आए आज भी आ रहे हैं, आप जानते हैं। आज भी जगह जगह आके बस चुके हैं हमारे बीच में। क्या हमें पता नहीं है? जो हमारी संस्कृति से उनका कोई सरोकार नहीं है, ऐसे लोगों को आप क्या समझाइएगा? ये एक प्रश्न है। It's a very, very poignant socio-cultural political question which has not been addressed. और अब उसको एड्रेस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे समय में याज्ञसेनी को याद करना, द्रौपदी को याद करना, परिणाम दुष्परिणाम क्या आ सकते हैं स्त्री का अपमान करने से? कैटेक्लिज्मिक नेचर, बाढ़ आ रही है, अतिवृष्टि हो रही है, अनावृष्टि हो रही है, ज्वालामुखी फट रहे हैं, बर्फ पिघल के गिर रहा है, समुद्र की सतह ऊंची हो रही है, सब कुछ हो रहा है। आप क्या सोचते हैं? वेद व्यास ने जो लिखा वो गलत था कि ऐसा ही होगा? स्त्री, नारी जाति, प्रकृति, माता, जननी, जगत कल्याणी, जगदम्बा, आदि शक्ति, में आत्मा, परमा पावनाकृति ही उनका अपमान होता रहेगा और प्रकृति चुप बैठेगी? बिल्कुल नहीं।
We may not be born of a fire, but each woman represents the Tretagnis, the three sacred fires. The Garhapatya fire that is associated with the household as we take on the responsibility of managing a household right from the youngest age. The Dakshinagni is a fire of nourishment and the prosperity. And the lastly, the Ahaniya fire, which represents the spirituality and sacredness. Our lives are a battlefield, and as we take on the multiple roles in our daily life, we come out victorious. If women are so tejasvi, so radiant and bright, then why should anything or anybody dull in their life? I'm sure that these 2 days conversation and a discussion has ignited a fire of a passion and thought in each one of you to tread forward and achieve all. Dhanyavad. Jai Hind. अध्यक्षा महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच ने 2 दिन में कई माणिक देखे हैं, कई रत्न देखे हैं, कई स्वर्ण देखे हैं और उन सारे माणिकों, स्वर्णों को जोड़ने वाले एक कच्चा सूत का धागा भी है जो बैक स्टेज काम कर रहा है, जो मॉडरेटर्स हैं, उनके सम्मान हेतु और धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं डॉक्टर गणेश पंडित जी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी नई दिल्ली को आमंत्रित करती हूँ। साक्षात् पशुः अत्र वेदिकायां क्षेत्रत्रयस्य विद्वांसः विदुष्यः सन्ति। साहित्यं, संस्कृतसाहित्यं, तत्र प्रतिनिधिभूताः वर्खेडिवर्याः, संगीतं, संगीत नाटक अकादमी अध्यक्षा संध्या पुरेचा महोदया, कला डॉक्टर सोनल मानसिंह महोदय, एवं अत्र सर्वेपि विद्यमानाः साहित्य संगीत कला संयुक्ताः एव। अत्र कोऽपि पशुः नास्ति। विशेषः नाम यथा साहित्य संगीत कलानां संयोगः त्रिवेणी संयोगवत् दृश्यते, तद्वदेव इयं दिनद्वय व्यापिनी राष्ट्रीय संगोष्ठी अपि तिसॄणां संस्थानां अथवा त्रयाणां संस्थानानां सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, संगीत नाटक अकादमी, वुमेन 20 G20 अंतर्गत वुमेन 20 इति त्रयाणां संस्थानानां सहयोगेन तत्र आयोजिता वर्तते। हम किसी भी कार्यक्रम हो, ये तो वैसे तो ऐतिहासिक कार्यक्रम है। आज तक शायद संस्कृत क्षेत्र में ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ है। हम नारी शक्ति को सामने से देख रहे हैं। जैसे हम पर्दे के सामने जो बैठे हैं उन लोगों को देख रहे हैं, मगर जो पर्दे के पीछे जो बैठे हैं नारी शक्ति, उनको हम नहीं देख रहे हैं। उनका भी सम्मान करना चाहिए, उनको भी सामने हमें लाना है। इसके लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। अस्याः संगोष्ठ्याः सुचारुरूपेण निर्वहणे, विविध सत्राणां निर्वहणे याभिः सहायं कृतं तासां सत्कारः कर्तव्यः इति संस्थानत्रयस्य तत्र अभिप्रायः। तदनु
माननीय कुलपति महोदयान् निवेदयामि तत्र क्रमशः एतेषाञ्च सम्माननं कुर्वन्तु इति। आदौ डॉक्टर प्रीति शुक्ला महाभागाः कृपया मञ्चम् आगच्छन्तु। मुक्तस्वाध्यायपीठे कार्यरता गणक वेदांत शास्त्र निपुणा विविध भाषा भूषिता अस्ति। प्रागुद्घाटन समारोहस्य सत्र निर्वहणम् अत्यन्तं व्यवस्थितरूपेण कृतवती। एवमेव डॉक्टर रेखा शर्मा महोदया जयपुर परिसरे शिक्षाशास्त्र विभागे या प्राध्यापिका वर्तते। उद्घाटन समारोहस्य निर्वहणम् अत्यन्तं व्यवस्थितरूपेण सुचारुरूपेण कृतवती। महाभागाः प्रार्थ्यन्ते। तदग्रे डॉक्टर संगीता शर्मा प्रथम सत्र संचालिका जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयस्य प्राध्यापिका वर्तते। ताः आह्वयामि। तदग्रे डॉक्टर सीमा अग्रवाल महोदया जयपुर परिसरे आधुनिक विभागे प्राध्यापिका वर्तते। एवं डॉक्टर सीमा अग्रवाल महोदया, डॉक्टर रेखा कुमारी महोदया हिंदी भाषाध्यापिका एषापि महोदया जयपुर परिसरे। एषा हिंदी अध्यापिका इति उक्तं, परन्तु संस्कृत अध्यापिका अपि अस्ति। संस्कृतेनापि अस्माकं विश्वविद्यालयस्य तत्र सर्वाः अध्यापिकाः भाषन्ते। अस्माकं माध्यमभाषा अपि संस्कृतभाषा एव अस्ति। विपाशा जैन जयपुर परिसर प्राध्यापिका एषापि सत्र संचालनं कृतवती। ताम् आकारयामि। डॉक्टर पारुल सिम वर्या विजिटर फैकल्टी शोध विभागे। डॉक्टर रोमसा शुक्ला दिल्ली विश्वविद्यालयस्य डॉक्टर रोमसा शुक्ला समापन सत्रस्य निर्वहणं कुर्वती अस्ति। विश्वविद्यालये सर्वदा कार्यक्रमाः भवन्ति, परन्तु सर्वदा कार्यक्रमेषु वयमेव भवामः। अस्य वर्षस्य वैशिष्ट्यम् अथवा अस्य कार्यक्रमस्य वैशिष्ट्यं नाम वयं पृष्ठभागे स्मः। तर्हि पुरतः नाम सर्वविध कार्यं काभिः सम्पादितम् इत्युक्ते आचार्य इदानीमेव उक्तं डॉक्टर अमृता कौर महोदया। वस्तुतः इदानीं एषा महोदया शैक्षिक अनुभागे मुख्यालये कार्यरता अस्ति। शिक्षाशास्त्र विभागीया अस्ति। एवं अत्र मुख्य संयोजिका रूपेणापि एषा अहर्निशं कार्यं कृतवती। एवमेव डॉक्टर सुनीता महोदयापि अपरा मुख्य संयोजिका वर्तते। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये मुख्यालये केंद्रीय योजना विभागे एषा अधिकारिणी अस्ति। ज्योतिषशास्त्र विदुषी च। यथा परिसरेषु अध्यापिकाः लसन्ति तद्वदेव इदानीं मुख्यालयेपि अध्यापिकाः अध्यापकाश्च सन्ति। एवं डॉक्टर स्नेहलता उपाध्याय वर्या तत्र ग्रंथालय अधिकारिणी अस्ति। स्नेहलता उपाध्याय महोदय अस्तु कार्यान्तरे स्यात्। एवं संगीत नाटक अकाडेमी तः तत्र राजू दास महोदयः, राजू दास जी। एवमेव ये सन्ति संगीत अकाडेमी मध्ये तेबा देवी महोदय अनन्तरं राजू दास महोदय, तेभ्यः वयं ताभ्यश्च वयं इतः प्रेषयिष्यामः। तदग्रे प्रधान संयोजक रूपेण तत्र के अस्माकं सन्ति इत्युक्ते
येषां चित्ते वाचि क्रियायां मधु तिष्ठति तत्र मधुकेश्वरभट्टः हसन्मुखिनः अस्य कार्यक्रमस्य सर्वस्यापि तत्र प्रधानसंयोजकरूपेण स्थित्वा पृष्ठभागे स्थित्वा कार्यं कृतवन्तः। अहं तेषां सत्कारं कुर्वन्तु इति विनिवेदयामि। कुलपतिभ्यः इदानीं धन्यवादाः। अहं जानामि भवन्तः आह्वयन्ति इति, अतः मम नाम अहमेव स्वयं त्यक्तवान्। केन्द्रीय योजना विभागस्य निदेशकाः प्रोफेसर मुरलीकृष्णवर्याः प्रार्थ्यन्ते मञ्चमागच्छन्तु इति। तेषां योगदानमपि महद्वर्तते अत्र कार्यक्रमे। ते इदानीमपि सम्पर्के सन्ति। बहवः अधिकारिणः मन्त्रिणः मध्ये मार्गे आसन्, तेषां कार्यवशात् केचन नागताः। कुलपतिभ्यः धन्यवादाः। आचार्य स्नेहलता महोदय आगतवती, मञ्चमागच्छतु महोदय। इदानीं धन्यवादसमर्पणमपि अत्रैव करिष्यामि। एकतन्त्रेण करिष्यामि। न बहूनां पञ्चसन्निवेशेष्वेव एतत् करिष्यामि, पञ्चक्षणेष्वेव। अस्माकं अस्माकं गुरवः तत्र अस्सां मध्ये विद्यमानस्य संस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतयः प्रह्लाद जोशी महोदयाः सन्ति। कृपया मञ्चम् आगच्छन्तु, गुरुवर्यान् प्रार्थये। एवञ्च वर्केडि वर्यान् निवेदयामि, तेषां सम्माननं कुर्वन्तु इति। कुमार भास्कर वर्मा संस्कृतविश्वविद्यालयः, प्राग्ज्योतिषपुरम्, अस्सां। याज्ञसेनी विषयिण्याः दिनद्वयव्यापिन्याः राष्ट्रीयसङ्गोष्ठ्याः तत्र समापन समारोहे ये मञ्चे सन्ति, विलसन्ति, कार्यान्तरेण ये बहिः सन्ति, तेभ्यः ताभ्यः अहं सनमोवाकं धन्यवादान् समर्पयामि। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संगीत नाटक अकादमी इत्यस्य अधिकारिणः ये भोजन व्यवस्थायां, आवास व्यवस्थायां, गमनागमन व्यवस्थायां, पंजीकरण व्यवस्थायां, वेदिका सज्जीकरण मंच संचालनादीनां व्यवस्थायां, प्रचार प्रसार व्यवस्थायां आसन्, तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि संस्थानत्रय पक्षतः धन्यवादान् विज्ञापयामि। विविध परिसरेभ्यः सत्र सभादि संचालनाय समागताः नारीमणयः धन्यवाद पात्रतां यान्ति। चोटीपुर कन्या गुरुकुलस्य बालिकाः, विविध परिसरीयाः बीएड बालिकाः, शोधच्छात्राश्च मया विशेषतः स्मर्तव्याः। कदापि विश्वविद्यालयस्य तत्र इतिहासे एतादृशः तत्र समावेशः न जातः। एतासाम् अदृष्टपूर्वं योगदानम् अस्यां संगोष्ठ्याम् आसीत्। एवमेव तत्र अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः रणजित् कुमार बर्मन् वर्याः अत्र सन्ति।
शैक्षिक अधिष्ठातारः प्रोफेसर बनमाली विश्वाल वर्याः अत्र सन्ति, प्रोफेसर रमण मूर्ति महोदयाः सन्ति, एवमेव परीक्षा नियन्त्रकाः पवन कुमार गुप्ता वर्याः सन्ति, मुक्त स्वाध्याय पीठस्य निदेशकाः रत्नमोहन झा वर्याः अत्र सन्ति, देवानंद शुक्ल वर्याः सन्ति, वित्त विभागीयाः शशिकांत महोदयाः, अनिल लोडियाल महोदयाः, प्रमोद महोदयाः, प्रशासन विभागस्य केटीजी मीनाजी अनूपजी प्रभृतयः अधिकारिणः, डॉक्टर जगन्नाथ झा वर्याः, संपर्काधिकारिणः डॉक्टर अजय कुमार मिश्र वर्यः, मनोज मिश्र वर्यः, प्रकाशन कार्यक्रम विभागस्य जितेंद्र कुमार महोदयः, गंगा शर्मा महोदयः, सोनराज पाटीदार वर्यः, रामनिवास महोदयः, अन्ये एलडीसी एमटीसी इत्यादिषु पदेषु विविधेषु अनुभागेषु च कार्यरताः कर्मयोगिनः, मुख्यालयस्य शोधच्छात्राः, पत्रिकाजनाः इत्येवं सर्वेभ्यः एकेन वाक्येन अहं धन्यवादान् समर्पयामि। सर्वेभ्यः धन्यवादाः ये प्रत्यक्षरूपेण परोक्षरूपेण साहाय्यं कृतवन्तः। अत्र बहवः सन्ति, कुलपतिचराः सन्ति, विविध विश्वविद्यालयानाम् आचार्याः सन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि मया तत्र नाम कदाचित् स्वीकर्तुं न शक्यते, समयाभावात्, अतः तेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। इदानीं शान्तिमन्त्रेण तत्र कार्यक्रमस्य समाप्तिः भवति। रोमसा शुक्ल महोदय तत्र सूचनां प्रयच्छति। धन्यवादः। ध्यान दीजिएगा, एक सूचना, अनुरोध और आग्रह है कि रात्रि भोजन का भी आयोजन है वहीं संगीत नाट्य अकेडमी में, तो फिर वही अनुरोध आग्रह और हठ भी है कि भोजन करके ही जाना है। कृपया शांति मंत्र के लिए सज्ज हो जाएं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।